Namaskar. Welcome to all the CAFC aspirants. Today in this lecture we'll be discussing, as you can read, mock test series 1 June 23. Let's begin with the first sum. Bate during the sums. Okay, simple sum on indices. I'll be pushing the power 6 inside the bracket. I'll be distributing power 6 to all the terms. Similarly in the denominator also. So 64 b raised to 24, its power 6 going with 4, and then a raised to 18. Now if I can just show you separately, it was a3 6. So when you know gel the powers, it's going to be a raised to 18. Similarly down also 4 when I release that bracket. So it's going to be a raised to 6 and b square. Similarly the next ab the whole square on distributing the powers a square b square. So first of all we got simple 16 cut, then 16. A raised to 18, b raised to 24, just rearranging the terms. Okay, I can club it's b raised to 4. And similarly I can club that a raised to 8. And now finally the answer happens to go 16. A raised to 10. No, when the 8 goes over here, minus 8. Similarly the 4 also will move up, minus 4. So b raised to 20. So that seems to be your answer. The option A is your answer. Easy indices का sum mock test है, so seems to be quite simple. Now coming to the next one, you need to read. It's a simple ratio proportion का sum, basically ratio का sum. 4 persons A, B, C, D, they happen to share a sum in the given ratio 5 to 4, 3. If D gets 1000 less than C, so okay, we have got A, B, C, D. They happen to share a sum in the ratio 5 to 4 is to 3. Now in parts, no, we happen to understand ratio in this way. A gets 5 parts, B gets 2 parts, C happens to get 4 parts, D gets 3 parts. So when you see difference in parts between C and D, there is one part ka difference, and that is equivalent to 1000 in the sum as given over here. No, D gets 1000 less than C. So in terms of parts, D was getting one part less than no C. So one part is corresponding to 1000. So I can see a relation of 1000 over here. I need to apply the same over here into 1000. That's 2000. You must be thinking B ka kyu dunda. The question was find the share of B. Okay. Can we see one more time in a different way? See, as I can understand, most of you happen to solve using the common multiple k or x. So you may be going A gets 5x and B gets 2x. No, my ratio proportion I go in this way. The difference in parts was 1, and that 1 was 1000. That was given to me in the sum. The D is getting 1000 less than C, and if you see in parts the D was getting one part less than no C. So one part was corresponding to 1000. So multiple was 1000. I had to just apply the same multiple over here. Can I cite one more example to make you comfortable with this kind of working? If at all you are used to that X kind of thing. So let me put up some other condition, not this sum. In the sum ka ratio will take it as it is. But let's put one more condition, one different condition in this. Rather they giving you this kind of thing. D gets, no, let's change it. The sum of A, C and D, sum of C and D put together was 7000. So C and D collectively happened to get 7000 amount. Now in terms of parts, collectively they were getting 7 parts, which in the sum as per my new condition, it's 7000 rupees. So again the relation is 1000. Now to find anything you have to apply 1000 ka relation. Let us say they ask me what's the A ka share. I have to just apply 1000 ka relation. The A ka share turns out to be 5000 rupees. Filhal the answer was apna B ka share was 2000 earlier what we got. As in we can see right now also in 2000 we happen to get 2000 rupees. So now moving to next sum. Okay, the mean proportion. Now before I jump into mean proportion, let us say they say A, B, C are in proportion. They mean to say A upon B is equal to B upon C. And then we cross multiply to see B square AC.
and then b is under root of AC, where b is called as the mean proportion. He is in the center of 3. So we call it as mean proportion. So when you want to find mean proportion B, it's under root AC. So now they want me to find the mean proportion of this and this. So he is like A and C for me. So the mean proportion B has to be under root AC. So it has to be under root of 12x square into 27y square. Now x square comes out of root, y square comes out of root. 12 into 27, 324, and then on the square root it's 18. So 18xy is the mean proportion. Check. Now coming to simple equation, no base sum. If thrice of age is 6 years ago is subtracted from twice his present age. Now sometimes the conditions put in such a tricky way, student can go, you have to be very patient while reading, and while reading only start constructing. So let age, a ka age be x, the present age be x. So they are talking about 6 years ago. So that time his age will be x minus 6. Now 3 times 6 years ago ka age, if it is subtracted from twice his present age, now you can't go reverse. This was subtracted from twice the present age. The result was what? The result would be equal to his present age. So can we come again? Let's check. We took the present age as x. So let's start reading. Thrice his age 6 years ago. 6 years ago his age will be, today it's x. So 6 years ago it's going to be x minus 6. Thrice this age was subtracted. This was subtracted from the twice the present age. So 2x. The result was his present age. So when I open the bracket, 2x minus 3x plus 18. Simple working, minus x plus 18. So x will move over there, plus में 2x is 18, the x is 9. So his current age is 9 years. His present age is 9 years. Option C was your answer. Now coming to quadratic equation. Quadratic equation में we all know that if we are not able to split the middle term to get to the roots, that's the most famous method what we have been learning from school levels. If we are not able to split the middle term, then school पे सिखा दिया था you need to use the formula to crack the roots. So the roots of the equation, which are x का values, it's equal to minus b plus minus root of, I am very sure that everybody knows this, upon 2a. What I was highlighting in this, or what I am supposed to highlight in this, is this. Okay, one of the roots will be going minus b plus the root, another root will be going minus b minus root. So just ask yourself, okay, if one of the roots go 2 minus root 3, the other root has to be then 2 plus root 3, because one will be going minus b plus root and other will be going minus b minus root. So if one of the root takes the shape of 2 minus root 3, the other will automatically take the shape of 2 plus root 3. Now having known both the roots, we can hit, so can I say alpha is 2 plus root 3 and the beta is 2 minus root 3. Let's come again. One of the roots in the equation was 2 minus root 3. On my knowledge of roots, I got it that one root takes the shape of 2 minus root 3. The other has to be of the shape 2 plus root 3. So my two roots are ready. Now I'll go for sum of roots, which I call S, which is 4. When you add, root 3 get cut. Then I go product of roots. You all may be thinking why he is going for that. When they ask me to form a quadratic, the first thing what strikes my mind is x square minus sx plus p equal to 0. X square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. So you all may be aware of this. Now sum of roots though was ready for me. Product of roots, a plus b, a minus b. This is going to be a square minus b square. So it's going to be 1. Finally my equation goes x square minus 4x, just putting s and p ka value, 1 equal to 0. So it's option number A. Wonderful question. But you can make a note of it.
We have a similar question out in our module also. If one of the root is a plus root b, the other has to be a minus root b. Or let me say p and q. If one of the root is p plus root q, the other has to be p minus root q. Once you know both the roots, the game is over. You just need to click your s and p and then no form the equation using x square minus sx plus p equal to 0. Now, log ka sum. They happen to say कि if it is log a to the base b, which normally all logs are log or of the shape log a to the base b. If a and b don't seem to gel with each other, you can now separate the two in this way. This is called as change of base rule. I would say couples were not going great together, so better divorce. Mane, for example, I have got log 2 to the base 3. Now 2 I can't express in terms of 3. So I would like to rather no keep it as log 2 upon log 3. आप अलग ही रह लो फिर. So change of base क्यों कहते हैं? Right now the base was 3. Now you can say the base is, let us say, of your choice A and A. Any base of your choice. But common base, of course. But in place of that, if I would be dealing with log of 8 to the base 2. I would not separate this. I would be no rather writing 8 as 2 cube to the base 2. Then the 3 will come down. And then log 2 to the base 2 is 1. So answer will be 3. 8 was gelling with 2. So I stayed, no, I prefer to keep 8 to the base 2. But if I have got something like that, I would like to open it. So now coming to the sum. You all may have seen the sum right now. So I normally prefer to make some sort of base before solving a sum. Because I don't know in what frame the student right now viewing this video is sitting. Is he right now fit in logarithms? He may have solved all the sums. But there may be a time gap. And he hasn't revised that much, he or she. So basically I just prepare a small base before so that you are comfortable getting the concept behind the sum. Now when I see all the logs, I see sub mein gadbad. Mane 4 and 3, 5 and 4, 6 and 5. They don't gel with each other. So I started opening. So that happens to go log 4 upon log 3, the first term. Similarly then it is log 5 upon log 4, the second one. Then log 6 upon log 5. भारी मात्रा में डिवोर्स हो रही है. Log 7 to log 6. Log 8 to log 7. The second last term. And the last one, log 9 to log 8. So finally I can see all this getting cut. So what I was left with in the numerator log 9, in the denominator log 3. Log 9 I could have written as log 3 ka square. Log 3. Power down, log 3 cut. The answer is 2. Quite easy sum. So let's move ahead. Okay, again a log ka sum. What if I shift the half over here? Half in the power is root. So I can see actually the y was log 2 to the base 10. Square root of 4. Similarly half I would prefer to keep it over, and half is basically root. So it is log 3 to the base 10 who is x for me. So I just simplified their x and y. वो half अच्छा नहीं लग रहा था, and the 4 was a perfect square, so I just prefer to raise the power half up its square root and then it's log 2. So we have a new data over here. Now what we are supposed to do? We are supposed to find the value of log 15 to the base 10. But you need to remember you only have log 2 and log 3 ka value. So I'm sorry. So that was log 2 to the base 10. Okay, now let's start. In the 15, somehow we have to bring in the 2's and the 3's because we only have log 2, log 3 ka values. And one more additional log 10, which is 1 because we are working on base 10 right now. So 15 I can max write right now 3 into 5 to the base 10. Now 5 is hurting. So 5 I'll change it to 10 by 2. Check.
Now let's apply log ka rule. The log will go inside. Now if I just brief you, log AB is log A plus log B, and log A upon B, it's log A minus log B. So let's start. We push our log inside. So जो into है वो plus हो जाएंगे, जो upon में है वो minus. So let's go into that. So it's going to be log 3 plus log 10 and minus log 2, because 2 was in the denominator. All are to the base 10. So finally the answer happens to go, log 3 was x, log 10 to the base 10 is 1, and log 2 to the base 10 was y. So finally the answer is x minus y plus 1, which seems to be your option A. Once again a quick glance at what happened. You have log 2 and log 3. So 15 में you have to bring in 2 and 3. First approach पे I wrote 3 into 5. But 5 is hurting. 5 you change it to 10 by 2. And now let's apply log का rule. जो into when log comes in, जो into है वो plus और जो upon है वो minus. So log 3 plus log 10 minus log 2. Then just putting in x and y, and we got it quickly. Now the roots are coincident, means the roots are equal. Now I would like to take you once again back to that. The roots can be found directly by using minus b under root b square minus 4 is just, I think so, a minute or two back I had in one of the earlier sums mentioned this. If the roots need to go equal, one of the roots is going to go minus b plus, the other root is going to go minus b minus. If somehow I remove this area, one going plus and one going minus, there they try to make the roots different. If that area, I somehow evaporate that thing, then both the roots are going to turn up minus b upon 2a. Both the roots will turn up minus b upon 2a. That means both the roots are going to turn up equal. So when you want roots to be equal, you need to make your b square minus 4ac 0, so that the root ka part is gone. So then no plus, no minus. So the roots are not going to go different. What we say, distinct roots. Both the roots are going to be equal. So for roots equal, the rule was b square minus 4. I think this must be one of the notes in your book. B square minus 4ac equal to 0 for equal roots. Now I got my a, I have got my b, and I have got my c. Can I highlight it? A is k minus 4. B is minus 2k. Ax square plus bx plus c. So the b is minus 2k. And the c is k plus 5. Let's fit in. So minus 2k ka square minus 4 into k minus 4 into k plus 5. Just brought in b a c ka value equal to 0. So now 4k square minus 4, if I open the bracket, k square plus k minus 20 equal to 0. Because I have 0 on the other side, I prefer to cut the 4. Now many do get confused in the class. Sir ji 4 kaise cut diya? Taking common 4 outside and throwing it on the other side. I said because I have 0 on the other side, I would like to take this benefit of getting rid of 4. Or you can think this way, dividing throughout by 4. So now opening the bracket, k square minus k square minus k plus 20. Check the sign change, equal to 0. So he is gone. Minus k goes on the other side, the k turns out to be 20. The option is B. So quite a easy sum. Now inequality. They give me two conditions, or I would like to be rather specific. They give me two inequalities. From there I need to figure out my x will be what. And the question says the x can take which of these following values. So let's first solve it. 3x plus 2 is less than 2x plus 5. So shifting 2x on that side, so 3x minus 2x will be less than 5 minus 2. So x is less than 3. So first my x needs to go less than 3. But I have got one more also. So 4x minus 5 is greater than equal to 2x minus 3. So when I shift 2x on that side, it's going to be 4x minus 2x. And minus 5 on this side, so minus 3 plus 5.
So 2x is greater than equal to 2. The x is greater than equal to 1. Now check this and this. Let's combine it. X needs to be greater than equal to 1. X needs to be greater than equal to 1. And x needs to be less than 3. Can I repeat that part? The last one. Combining the two. Let's combine. X has to be greater than equal to 1. Okay. And it has to be less than 3. Done. Now which values from this happen to fit into this domain value of x, or maybe this range of x? Let me not confuse you with your functions and relation. I see x2 fits over here. When you see 3, unfortunately we don't have equal to over here. So 3 can't be incorporated. Minus 1 goes out of the range. Minus 3 again, it's out of the range. So only 2 falls in the given range of x. So we say the option C. Read the question. X can take which of the following values? I got x needs to be over here. So only one value x2 fits in that given range of x. Now, I'll make a small correction. Probably these are all no questions set up, or no, it's like, I hope you all know KMTPs and your past papers. They are all suggested questions. Somebody appeared and then a group of students happen to just narrate के ऐसे ऐसे questions है, तो the questions are framed. So may differ. Options though surely happen to differ from what they recollect and what actually were there in the paper. Now I do personally feel after solving the sum, none of the options matched with the sum, with the answer. So it was not one pen, it was one bag. So let's solve. It's a simple sum, I think so. A school kid would have finished off quickly. हम जितने टाइम बात किया होते में तो खत्म कर लिया था. Cost of 3 pen and 4 bags is 324. So can I say 3x plus 4y is 324? I think x and y anybody can understand. X is the cost of one pen and y is the cost of one bag. So I'll say pen is costing and bag is costing y rupees per unit. So 3x plus 4y 324. 4 pens and 3 bags put together, it cost me 257. Now solving. Can't use the options basically for one simple reason. Option में you are given only cost of one bag. You are only given y ka value. You are not given x ka value. So no, sometimes they give you x and y, so it becomes easy for you. Rather solving, just check which option satisfies both the equation. That's your answer. But right now solving is the whole game. So I would go for into 4 into 3. So that's going to be 12x plus 16y and then 324 into 4. That's 1296. Now multiplying that by 3. 12x plus 9y is equal to 257 into 3. That turns out 771. So subtracting minus, same sign change. 7y is equal to 525. I did it orally. So then 525 divided by 7 would give me 75. When you put y, let us say over here to get your x. So I will show you that. 3x plus 75 into 4, 300 is equal to 324. So 3x is 24 and x is equal to 8. So if the question was get me the cost of one pen which is x, the answer was 8 rupees and none of the options happen to go 8 over here. So either the option happens to go wrong, or maybe then the question should not be the cost of one pen, it should be cost of one bag which is y, which is 75. So option D happens to go in our given question with of course a few corrections here and there. Now moving to the next sum. It's a time and work sum. Yeah, simple logical sum. Of course time and work very few happen to do in ratio proportion. It's a part of ratio proportion, but with your new syllabus they have brought in time and work. But when this attempt was happening, time and work was not a part of syllabus. So I doubt how many may have approached the sum. Some could have been approached logically also.
You all have started reading the question. In a hostel, ration, खाना, stock for 400 students, 31 days के लिए. So the ration was for 400 students and for 31 days. So 400 students can feed on that no ration for 31 days. 28 days के बाद 280 students were vacated from the hostel. They were asked to leave or they left. 28 डेज के बाद इतने लोग चले गए तो राशन तो 3 दिन का पूरे 400 लोग का बाकी था. In the remaining 3 days, all 400 students का ration was left in the ration store or in the store. But now on that ration only 120 people had to feed. Now you started thinking, sir, 120 कहीं सब में नहीं दिया है. Oh, that's common sense. 400 students started, 280 left. So now only 120 will be feeding on that big chunk left, which was meant for 400 students. So how are you going to approach? So the remaining ration will be sufficient for the remaining students for how many days? Of course not for 3 days, which was actually supposed to be as per the schedule, but now it's going to survive for more days because so many people left. So my approach will be this way. One student, let him consume 1 unit ration per day. माने I would not go into unit. सर यूनिट में राशन में क्या आएगा? 1 वाट की मूंग, एक वाट की दाल, 1 वाट की चावल, all this put together makes 1 unit. Let us not discuss on that. One student takes in or consumes 1 unit per day. So we had 400 students. They'll be consuming 400 units per day. 31 डेज में से 28 डेज का तो कहानी खत्म हो गया था. आफ्टर 28 डेज का कहानी है. So 28 days तक everybody was consuming properly. So every day 400 units were consumed for 28 days. It was pre-planned. They had put in stock. Let's talk about the balance 3 days. In the balance 3 days, the ration left was 400 into 3. Simple. 400 units of ration every day. So how much will be left in the last 3 days? 400 into 3. That many units of ration will be there in the store. But now on that, only 120 people will be feeding because 280 left. So then, I think 10 days the ration will survive, which was actually supposed to be getting over by 3 days. Another 3 days. If all the 400 students would have been there in the hostel till the 31st day. Can I come again? Okay. Can we see the last part? Maybe what divide and something was to speedy. Okay. One student, 1 unit ration per day. So 400 students will be consuming 400 units of ration every day. 20 days का तो बात खा लिया, खत्म हो गया, राशन भी खत्म हो गया. So why should we talk about those things which is already done? And that too as per the planning. Let's talk about the last 3 days. जहाँ सब हंगामा हुआ. Last 3 days में the ration in the store will be 400 units per day के हिसाब से 400 into 3 units will be there in the store. But now in this, how many people are going to feed on? Only 120 students. So divide by 120 to find out how many days. Now, or you can say 120 students will be now using only 120 units of ration every day. And we have in all 1200 ration. So 1200 units ration was there in the stock. And now daily consumption will be only 120 units at the given rate, 1 unit per day. So it's going to survive for, or the stock will take them for another 10 days. Only after 10 days the ration people have to think of replenishing it or refilling it. So 10 more days the existing ration is going to be sufficient. So the answer is D. So common, simple, logical, but I would say these sums come from the category of time and work. Now students are always comfortable solving this kind of sums once they have got this kind of topic in the curriculum. Now again, equation making. Sum of two numbers is 8 and the squares is 34. Sum of squares.
Taking 1 as x, so you are supposed to take 1 as x, the other is going to go 8 minus x. Here I fear, no, few students, those who have not been that great in maths during school, no, they get tempted. One is x, the other is x minus 8. No, 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 the total was 8 of two numbers. If one go 2, the other has to go 6. How did you get your 6? 8 minus 2 karke. So if one is x, the other has to be 8 minus x. Now what is the condition? Sum of squares is 34. So then x square plus 8 minus x square is 34. Now don't get into solving. Why should we solve when they have given me the two numbers? So just fit it over here. No? Let's fit. Let's fit the option A. If x is going 7 square, the baju wala has to go 1 square. Now that doesn't fit over here. In fact, 7 10 was never supposed to be checked because sum of two numbers have to be 8. So I personally feel it should not be 7 10, it should be 7 comma 1. Now just check, the sum is 8 in all four. So we were supposed to check the options. Now I hope you got the point. Okay, in equation making, you may be a bit emotional. You may just skip few tricks. Okay, rather putting x and quickly seeing who gets me 34, I started solving a quadratic equation. And let me share with you, even the finest students at particular time, quadratic starts hurting them when it comes to factorizing and you're not able to split the middle term and the time clock is ticking. So always no equations may have to be ready. Is there some other short method to get to my root? X are the roots. So now coming to option B, 4 comma 4. If x is going 4, of course the bracket also will go 4. So 4 square 32. It's not 34. Option C, if x is 3, so 3 square. When I put 3, I get over here 5 square. 9 plus 25, surely that's 34. So option C is your answer. The two numbers are 3 comma 5. Of course, you could have avoided that also. Orally check ho jata. A, B, C, D all are satisfying your first condition, sum is 8. If I take the correction 7 comma 1 in place of 7 10. And then we have to see the second condition. Sum of squares, 49 plus 1, no way. 16 16, no ways. 9 and 25 ka sum 34. Yeah, okay. So could have avoided the making of equation because they have not given me option में equation. Now, time value, money. So get ready with your calci. You have got no many sums. Minimum 12 13 sums they happen to ask you. So let's put in all the efforts. We have calci with us. Of course, my calci is slightly different. How different it is? You have one advantage, I have one advantage. For me, reciprocal, I can do that. 1 by x. You have to go divide equal to. I'm just setting up. Okay, we all know these few things. You have the screen over here. I don't have the screen. So when you're going for that power raising, you can take the help of screen. When I raise to 10 karna, you press your equal to till it goes to 11. But I have to actually count while pressing equal to which power I am dealing with. Okay, now coming to the sum. 80,000 is invested to earn a monthly interest of 1200 at the rate of. And luckily they gave me no SI. So I would have tried both ways to see which option goes with my answer. 80,000 to be invested. Okay, so SI ka formula happens to go PNR upon 100. Now amount invested was 80,000. Monthly interest bolega to 1 by 12. Rate is something what you are supposed to be, supposed to find. And simple interest what you get monthly is 1200. So easy. First of all, I can get rid of this. And now on the calci, I'm supposed to go 1200 into 12 and then divide by 800. So divide by 800 happens to give me 18. My R is 18% per annum. Simple sum. Okay, moving to now. Find the present value of ordinary annuities. So सबसे पहले present value is annuity into 1 minus 1 plus I raised to minus n upon I.
Okay, 8 quarterly payments. So 8 payments of 500. The rate of interest being 8% per annum, but we have to convert into quarterly rate. So 8%, 4 quarters, so divide by 4, it's 2%. So your I is going to be 0.02, if I am not wrong. Your I is the rate of compounding per period. And over here the period is quarters because payments are coming quarterly. Okay, let's get into the solution. 500 was the payment what you were issuing 8 times. So 1 minus 1.02 raised to minus 8. 8 quarterly payments. Divide by 0.02. Now, no supporting values are given, so you are quick on CAFC. I'll be going 1.02 into equal to. So I'm done with my square. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is 1.02 raised to 8 ka value. I'll have to press the reciprocal. You will have to press divide equal to and you will see the same value. So we are done with that much. Now minus 1 we went ulta subtraction. So we are bound to see you are also seeing plus minus. I am also seeing plus minus. So we press plus minus to get rid of plus sign minus sign sorry. Then divide by 0.02 and into 500 each installment size. It turns out to 3662.74. So any answer close? Okay, 3662. Option C is your answer. Now, effective annual rate. Can I talk a bit on this? You may have seen earlier few videos where you may have come across a similar kind of some effective rate, and every time I happen to speak. Now you may say every time why does he happen to speak on the same thing? I don't know which student happens to watch which video first. This doesn't go as a no sequential attempts. Now somebody may start with June 23, somebody may start with December 23 MTPs and past paper. My belief is first I always been telling towards the end of my 40s before my partner joins me. Okay, need to finish off MTPs and then past paper should come after that. Man, I don't mean to say कि December 23 का 2 MTP कर लिया and then you immediately jump to the past paper. No, don't do that. My suggestion, okay, there can be differing views on this, of course. My suggestion is at least 6 to 8 MTPs. You have warmed up like anything. Now, state level matches. So you are going for your, no, what do you say, attempts, past attempt papers. Enjoy again, no, 4, 5. So 5 past attempt papers, so each will be having 2 series ka 2 MTPs, so 10 MTPs and 5. Now we are ready for the national level game. Champions coming out. Let's get into effective annual rate of interest. Let us say that I was dealing with 10%, but per annum, compounded semi-annually. So let me deposit 100 rupees. So at the end of 6 months, I'll be getting at the rate of 5% 5 rupees. So now my balance moves to 105, or you can say the principal now moves to 105. Principal happens to grow because the interest what you get is not you are getting it, it gets added to the principal. Now on that 105, what you see over here, in the balance 6 months, we are talking of a year, you happen to get another 5%. So which is 5.25. So you get 110.25. Argument is, rather giving 10% per annum compounded semi-annually, what if I apply only one rate and still I reach to the same target value? What that rate will be? Of course, anybody would have said 10.25%. On 100, pay me only one shot 10.25 and make me reach to 110.25. That 10.25 is called as the effective rate of that nominal rate or the normal rate. So 10% per annum compounded semi-annually is effectively 10.25%. So क्लास में कभी कभार में मजाक कर लेते हैं ऐसा. होर्डिंग पे 2 स्कीम था.
एक में लिखा था 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली और दूसरे में लिखा था 10.1% ईयर एंड. Our father got tempted on, please don't mind, fathers, your fathers, my father, they are very well educated because they are from the previous generation. So their minimum education also is much powerful than our today education. I believe in that. So this is a debatable issue. We are not going to debate on that. But coming back over here, 10% per annum compounded semi-annually. So you were good. आप अभी अभी एन्युटी कर रहा था और आप और फादर गए वॉक पे और आपने वो होर्डिंग पे देखा. You jumped immediately to scheme A because you knew K that is 10.25%. Father got tempted with that 10.1%. That's how the knowledge of annuity or time value of money helps us. हमारा जनरेशन का भी वैल्यू है, माने योर जनरेशन ऑल्सो इज वैल्यूएबल. सो व्हेन यू एक्सप्लेनिंग मी, ही फील्स सो रियली प्राउड ऑफ इट. हिज आईज आर फुल ऑफ टीयर्स. ही फॉरगेट्स के वो आप अपना ही पैसे का देखभाल कर रहा है वो. द मनी descends to you. So coming back over here, coming back, you got the effective rate. How do we happen to find the effective rate? It's going to be 1 plus I raised to n minus 1 and into 100 towards the end to make it percentage. As we all know, I has got inbuilt 100. As in if I take in not our sum, but if I take this one, will I be getting 10.25? Let's work it out. So 1.05 because I is per period ka compounding rate, and over here the period was 6 months, half yearly the rate was 5%. It got compounded 2 times. We talk of a year, so it got compounded 2 times at the rate of half year. So raised to 2 minus 1 into 100. So let's figure out, are we going to get 10.25%. So it's going to be 1.05 into equal to minus 1 into 100, and that's equal to 10.25. So I now feel so comfortable. Okay, he explained with an example and then he applies the formula on the same example to get to the same answer. Now coming back to our sum. Normal rate is 6%. Normal rate is 6% half yearly. So I got it, it's 3%. 6% per annum, half yearly means 3%. So it's going to be 1.03. Half yearly means in a year it will be compounding 2 times. Minus 1 into 100. So let's go quick on the calci. 1.03 into equal to minus 1 into 100, and that's equal to 6.09. So effective rate is 6.09. Is there in the option? Yeah, option number D. Now moving to the next one. A trust fund has invested 27,000 money in 2 schemes, scheme A and B. Money total 27,000. A part of it, no, it's not equal parts, then the sum makes no sense. A part of it went into scheme A and the other part went into scheme B. The scheme A was offering 8% and the scheme B was offering 9%. The only ugly part of this statement now is what? It did mention SIK CI. It did not mention SIK CI. So there lies the fix. Now that adds on time. We may reach to the solution, but it's going to add on time. Because first, anyhow a student would have tried with SI. And then he would not have got any of the answer in the option. So he would have, or you are supposed to follow this way. If SI CI is missing, भगवान का नाम ले लो अपने अपने. Let's start with SI. Pray to God SI करके एक आंसर आ जाए. But it didn't happen in this case. And there comes the speed and there comes the practice. We'll talk later on. And if it doesn't happen, then we have to go CI. But right now, SI has not worked out. So I'm not going to waste your time. SI didn't work out in this sum. So I am taking CI. Total amount of interest accrued was 4818.30. So let's start. No, CI1 plus CI2 is equal to 4818.30. You can solve using X, or what you can do is you can go by option. Option may take time if it is not ABC, or even if it is C, then you are solving 3 times. So you should be comfortable solving both ways.
x के साथ भी कर, पहले x के साथ सॉल्व कर लेते. So 27,000 में से a part went into A and the other part, which is 27,000 minus x, went into B. Okay, let's apply CI का formula. CI1 was interest on the first scheme wherein you have put in your x amount. So what is the formula of CI? It's going to be P1 plus I the whole raised to n minus 1 in the square bracket. That happens to give you CI. So what's the amount you have invested over here? X. The rate is 1.08 for 2 years minus 1. I hope you saw that. Plus, what is the amount invested in no second scheme, which is 27,000 minus x. Check please. And into what? 1 plus I raised to n minus 1. So 1.09 raised to 2 minus 1. Toda sa, I hope you can manage. Now the working. So 1.08 into equal to, I finished off square, minus 1 x. No, it's x over here, so you can't put that in the calc. So I'm getting to 0.1664 x plus 27,000 minus x. That's bit hurting, but we have to carry on. So 1.09, I'm doing this now. 1.09 into equal to minus 1, which gives me 0.1881, and that's equal to this amount. So lack of space, I'm not right now adding it. 0.1664x plus into 27,000. I just took the help of calc पे जो number था. So 78.7 minus 0.1881x. Now that's equal to 4818.30. Okay, so let's finish off that. So it's going to be 0.1664 minus 0.1881 equal to, so it's minus 0.0217x, 5078.7, and that's equal to this amount. It's still going on. So what we can do now is 4818.30 we can shift on other side and subtract. So 5078.7 minus 4818.30, and that's equal to 0.0217x. Can't help it, we need to go that way if you are selecting x. So by now I think many must have figured out that yaar, x seems to be very costly over here. It is, of course it is time consuming. In that cases you have to be quick with deciding, okay, should I take option. Only risk involved is what? When you take options, if the option turns out C or D, it's again a time consuming process, but that time you can work quickly because you are working with numbers. Now why I had to put all these values? Because it was going in x, so I had to keep writing all the stuff. Now let's finish off the last shot. It's going to be 5078.7 minus 4818.30 equal to, and then divide by 0.0217. I just pray to God, 12,000. Okay, the answer is 12,000 because they asked me what was the amount invested in scheme A, which was X. So 12,000 is my answer. Now it was a long one. Of course, you need to understand only the first line, basically writing CI. But coming to time value of money, I do understand that every student out there must be very comfortable writing CI ka value. It's A minus P, where we happen to take P common. So P common 1 plus I raised. So you can see that over here. You invested X at 8% for 2 years, so 1.08 raised to 2 minus 1. Now that finishes off your CI for the first scheme. Now what CI you get for the second scheme? What had you invested in that? The balance amount 27,000 minus X. For 9% 2 years, so 1.09 raised to 2 minus 1. Only thing, the working and then opening the bracket, that takes a lot of time. Even if you are quick, it's going to take time. And you have to be really zappy quick in this. So you ate away almost 3 to 4 minutes time. So that happens to take away your towards the end ka questions, which may turn out very easy.
So sometimes students are so good, and this all goody things happen to those students because they have taken at home efforts, mentally preparing themselves. Okay, when I come across this kind of sum in the early half of the paper, I'll put some double dash, something, some notation over there. I'll come back later on. And because I know the sum, I'll be going quick in the piche ka sums because I know I need to come back and attempt this kind of few 2-3 sums which I know it. So even that gives you a good boost. Rather putting 3-4 minutes over and losing out on at least 7 to 8 sums which you felt before submitting, oh gosh, this was so easy, I could have managed it easily. Time is the big killer in this exam. But now, and for that you need to do all this MTPs, and so those listeners and those who are not listening but their friends are listening to this video, please share it with your friends. इतना पार्ट कट कॉपी करके सुना दो उसको, थोड़ा वो फट जाएंगे तो थोड़ा बोलते ना अलर्टनेस brings in a different form of energy in you. Alertness और fear में बहुत फर्क है, but people misunderstand the two things as the same. मैं चौंकाना था, थोड़ा लोगों को लगा मैं घबराया हुआ सहमा सा हूँ. नो नो नो, alertness brings in lot of good things. You are alert because you are watching this video. You are thinking something about yourself. Now, let me come back. This is something which I could not afford. Such a big solving. Of course, I leave it to your wise decision as to what process you would like to, because I have seen students working out this also quick. It's a game of 2-3, but of course 2-3 minutes का तो game है. At least 2 minutes, even if you are too quick. So don't come and challenge me, sir, I did it in 1 minute. Of course, then you must have seen this sum 2-3 times, so that's a different thing. Now, option 12,000 आंसर है करके मैं 12,000 नहीं ले रहा है, because it's option 1, I took 12,000. So 12,000 पे you are getting 8% CI. So on 12,000, 8%, 1.08 raised to 2 minus CI का formula, plus the balance 15,000. I am not using X. So if scheme A takes away 12,000, the balance 15,000 will be parked in your scheme B. And there you are earning a CI at the rate of 9%. So 1.09 raised to 2 minus 1. So let's work out and let's keep praying the answer should be, no, this is my check. This is my check. Solving this too, I should get this answer, this interest. Now, 1.08 into equal to minus 1. So I'm done with right now that much. Into 12,000. So 1996 point. You can use memory. If you are good at memory, you can use your memory. M plus M minus जो भी है. Now, second part. 1.09 into equal to minus 1 into 15,000. So those who are quick on CAFC and they are using money, you can put the first value in the memory. And then no M plus N, you get your answer. 2821.5. So plus 1996.8, the earlier one, 481.3, and that's what my interest was total. So 12,000 was a short answer for yourself. Now, so I leave it, but this is not the full solution what I displayed right now. I said when I was solving the sum, I tried first SI. I could not. And then I thought of CI, and CI got me one of the options, as you saw right now. It rarely happens, but if it happens, you should be mentally aware के ऐसे sum में first we try SI and then we try CI. So now coming back, okay, a sum of money was invested at CI, doubles itself in 4. This is wonderful sum. It brings in your indices also. It's again a textual sum. I mean to say module ka sum. Money doubles in 4 years, compounding CI pe. So I would say, no, in CI, when you are compounding, your money becomes A. When you put in P into 1 plus I raised to n takes you to A. Now your money becomes 2P. Money becomes double.
In how many years? In 4 years. So 1 plus I raised to 4. So 2 gets, no, P gets cut. So I read it in this way, right, as of right now, this line. My 1 rupee is becoming 2 rupee in 4 years. In 4 years. This will become 32 in how many years? So for 2 to become 32, I'll have to raise 5. So raising 5 on both sides. No, squaring both sides, cubing both sides. So we say we have to raise to the 5 on both the sides to make it 32. So now my 1 rupee has become 32 rupees. But the time has moved to 20. Now if I just see the A is equal to P 1 plus I raised to N, I can see in the end the answer was 20. So it takes 20 years. But this sum can be solved in a very easy way also. This was one of the easiest ways. But you could draw that timeline starting from 0. 4 years ka block, 4 years, 8 years, 12 years, 16 years, 20 years. You put your 1 rupee. In 4 years becomes double. Another 4 years it becomes double of what it entered. So at the end of 4 years your amount had become 2. Now he is entering into the next 4 years. So he'll be the principal. It doubles 4 in 4 years. This will double in the next 4 years. So 8. This will double in the next 4 years, 16. And this will double in the next 4 years, 32. So your 1 rupee becomes 32 in 20 years. Now that was my T and that was my investment. So that way also you can quickly finish off solving the sum. Now, standard sum. But probably modules do happen to have this same kind of sums, but not asking you rate of interest. So thoda sa I was bit alert. Okay, something more in the sum. But I knew the working of difference between CI and SI. So they are saying if you have read the sum, the difference between CI and SI is 96. Particulars are given over here. Now CI ka working will be, I think so, P1 plus I the whole raised to N minus 1. SI ka working was PNI up PNI. Let us say ke SI, which I have been always saying PNR upon 100. Let me call this R upon 100 as I, which is so standard when we come to compounding and annuity ka sums. So let's call PNI. So P to common hai. So I will be writing only NI over here. 96. I hope you got it. SI is PNI. Now let's fit in the particular. On the amount 15,000. So you have put in amount 15,000. Then the big bracket. Rate of interest not known, but time, yes, 2 years. Minus 1 minus 2i. N was known to me. It was 2 years. So now the working. So 15,000 is equal to, I can open 1 plus I the whole square and see the magic. It's a square plus b square plus 2ab. A plus b the whole square for that. Minus 1 minus 2i. Oh my gosh. Naseeb. 2i gets cut. The 1 also gets cut. Only the I square was left. So I square will be finally 96 divided by 15,000, which is equal to 96 divided by 15,000. I'm so sorry. 0.00 I square 64. And we press the root sign to come to I, which is 0.08. And we all know I has got 100 dissolved in it. So answer is 8%. Because if it is 8%, we happen to take I as 0.08. So quite easy sum, I think so. It adds to your kitty. Because as I said, if you are practicing module sums and few other similar sums, you don't happen to see CI minus SI mein they are asking you rate of interest. Working almost turned out same. But only thing you have to be comfortable with your 1 plus I the whole square. तो कुछ स्टूडेंट्स वो देख के डर जाते हो, gosh this is going getting into an ugly equation. खोल के तो देखा होता, सब कट गया. So coming to the next one. Oh, you have to select between the two machines if you are reading similar sum module. In fact, I can recall it's a type of one solved example of your module.
There are two machines. First machine is costing 10,000. So can I make some good space over here? Space will be bit a small constraint over here because we have to solve two sums. So okay, let me figure out. We are talking of machine 1. You are putting in 10,000. Put. That's your cash inflow. Let me not use big words unnecessarily. आपने 10,000 पैसा डाल दिया रुपया to buy the machine. Machine is a life of 7 years. And it saves what? So we have to read. It saves no expenses of 1900 annually. So it gives you a benefit of 1900 annually for 7 years because the life of the first machine is 7 years. So it becomes an annuity. You are receiving 1900 every year for 7 years. Annually 1900. Sir, हमें मिल थोड़ी रहा है. The amount saved is what you gain. So you are getting 1900 from that machine every year end पे. First year खत्म हुआ आपको 1900 का benefit. Second year खत्म हुआ again 1900 का benefit. So it's like the machine is giving you back 1900 regularly at every year. आप एक काम करो ना, उस मशीन को बोलो मशीन चाचा. मशीन पे खड़े चाचा को मत बोलो, मशीन को बोलो मशीन चाचा. ये सारे 1900 जो आप 7 साल मुझे साल टू साल देने वाले थे, एक काम करो सारे ही आज दे दो. So it becomes a present value of annuity. So let's figure out the present value. So it's going to be a 1 minus 1 plus I the whole raised to minus n upon I. The rate of interest we can see towards the end, the money borrowed or money is growing at 10%. उसी राह में. So now coming back, 1900 is the installment what the machine is paying me back year to year in the form of benefits. 1 minus 1.1 because 10%. So I is 0.1 raised to minus 7. 7 years upon 0.1. Okay. So let's do the calculation. You have to be really quick in all this. So practice. These are few common sums, but the only problem with such sums is they take time. Even if you are fast, it takes time. But you can manage it. You can come by solving such type of sums when you are quick in doing that. I do understand that somehow they need to give you extra that values of P and I. Or at least 1 plus I raised to n का value. माने 1.1 raised to 7 and 1.1 raised to the next is 5. So 1.1 raised to 7 or 1.1 raised to 5 का value तो कम से कम दे दो. They happen to. I have seen in the attempts. They do happen to give you values. So thereby you can save time. So now coming back to solving, you may all have started. You may have got your answer of present value of. So 1.1 we are first going to hit this one. Into equal to I went 3, 4, 5, 6, 7. Can I work one more time? 1.1 into equal to square. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, that's my 1.1 raised to 7 ka value. This is my 1.1 raised to 7. I'll press reciprocal. You press divide equal to. Subtract 1. We are going reverse. So to remove minus, we press plus minus. And then divide by 0.1 into 1900. So it is giving me back 9249. So that's coming in. Machine is asking for 10,000 and giving back only 9249. I would say this is a loss making machine. माने मांग रहा है 10,000 मुझसे कि मैं तेरे घर आऊंगा 10,000 दोगे तो, और घर आके फायदा क्या दे रहा है 9249. Present value because I paid today 10,000 to get that machine. So today it is going to give me in all benefits how much. So present value of annuity काम में आ जाता है. So today it gives me a benefit of 9249 versus the input cost of 10,000. Doesn't seem to be good. I am making a loss. I would say rather आप machine मेरे घर मत आओ. So coming to the next machine. Let's not talk now. We have just prepared a frame. So machine 2. How much put करना है माने cash inflow while purchase, sorry cash outflow, I am really sorry.
That's the cash going out from your pocket. So cash outflow going out is how much? 8,000. You have to read that, costing 8,000. Life is 5 years. Benefit what it gives in terms of labor expenses का saving is 2200. So in क्या आ रहा है, पैसा क्या लाके दे रहा है वो मुझे? It gives me a benefit of 2200 continuously for 5 years. So I requested this machine, second chacha, machine, is it possible, can you give me all the benefits of 2200 in the successive 5 years, what you are going to give me every year for 5 years? Can you put it all together and pay it to me today? So he said, okay, I'll pay you the present value of annuity. So again, can I come to this kind of calculation quickly? So it's going to be installment 2200, 1 minus 1 plus I, so 1.1, raised to minus n, which is 5, life is only 5 years, and 0.1. So now let's start. 1.1 into equal to and 3, 4, 5. Okay, this was 1.1 raised to 5 ka value, but I need raised to minus 5. So I'll press reciprocal, you press divide equal to. Minus 1, we are going ulta. So plus minus to remove the no minus sign. And then divide by zero point 0.1 into 2200, and that's equal to 8339. Now this seems to be positive. Machine while coming in is taking away 8,000 of mine. But benefit, today if he is paying me all the benefit, he pays me a benefit of 8339. So I'm in a profit of 339. Second machine should be purchased. आने के लिए 8,000 मांग रहा है, because when you want to purchase you'll have to pay 8,000. But आके आपको benefit दे रहा है 8339. So you are in plus of 339 rupees. Makes a profit. Second machine should be purchased. Now, coming to next one. I hope you all enjoyed, but it's time consuming in the sense we are talking, we are discussing करके. बाकी if you are good with your annuity का sums and you are good with your calculation or moving fingers on your calc, that's what I keep telling. Time value of money demands lot of calculation. So every weekend may once you should sit with a set of 15-20 sums just to give you that good zappy quick no fingers on your calc. वो कहते ना, for a marathon you have to practice daily, or for any good thing you have to practice daily. Daily तो afford नहीं कर सकते, four subjects spread out, so but weekend you should keep के maths का ये topics which take away a chunk of questions. I should always keep 10-20 sums no in my kitty. Weekend में I will solve that. Now coming back to the next one. Now, what's the issue in this when I am coming to talk about not the sum? 20 sums kitty में तेरा मन है, शनिवार सवेरे है, मन है, स्केड्यूल में रख भी दिया है, 6 से 7:30 करता हूँ. But by the time of 6 you are actually exhausted because you were doing lot of stuff regarding your foundation preparation. Now दिमाग में एक बात आता है, वो 20 सब मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, which 20 I have to select. Now if you are planned on Saturday evening 6 to 8 or 6 to 7 20 sums, you should have kept that 20 sums from your question set book or from the module set, whatever you have practiced before no coming to this kind of stage. You should keep that 20 sums ready, so that the thing is ready, calc is ready, book is ready, pen is ready. I have to just sit down and solve. And by the time you wrap up your 20 sums, next week my 20 sums करने का है, अभी बंद कर रहा है, all the sums are in front of you, you are in good nick of that topic, again mark next week का 20 sums. These are few smart moves, just thought of lending it to you. No hard and fast rules. Coming to the next sum. How much amount is required to be invested every year? Okay, invested every year. So annuity. To accumulate 5 lakhs at the end of 12 years. So future value मुझे मालूम है.
So let me jump to magar 1 second. Okay, future value is equal to a 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. Here I take a pause. Is it immediate annuity due? Have I to put the amount every year starting from today itself? ऐसा कुछ भी mention नहीं है. Now before I go आगे, I saw something really good out here. So let me brief you once again. This bracket का stuff is called as ANI, or it is ANI. It is called as future value interest factor. In the sum it is provided to me. So let's check in. Future value, I am so sorry. Future value is something what they have given to me. So this is 5 lakhs what I need at the end of 12 years. So 5 lakhs is my target value. How much I need to keep aside? A. Or you can use some other alphabet C or something like that. Now, the rest, which is A and I, which is as per sum A12, 0.1. A and I in my sum is A12, 0.1. कैसे पता चला? It's a game of 12 years. Every year you are going to put in one installment for 12 years. So N is 12. The compounding rate is 10%. So I is 0.1. So A12 comma. I have to just fit in the value 21.3843. So if you actually work out this formula using your N as 12 and using your I as 0.1, you will turn up this value. But then I think that would have been really foolish. Okay, you worked out the value and the value was given to you directly over here. So if you want, if you are sitting at home, thoda sa leisure time, you can always work out. But I think all this you must be knowing while you are going through the topic. Okay, the bracket is ANI, which is called as a future value, interest factor. And a similar bracket in the present value is called as the present value interest factor. And these values are available to you in the annuity tables, which are at the last pages of your module. So they pluck out the values and attach in the sum, which is actually blessing in disguise, but people don't happen to use it because they don't happen to use it frequently while they are practicing. Coming back, we push 21.38 down over there. So 5 lakhs divided by 21.3843, and that's going to be the installment size is 23,381 something, 23,381. The option A is your answer. This amount you have to put aside starting from this year ends for 12 years, and your target value 5 lakhs is going to happen at the end of 12 years, the future value. So sometimes if you are very comfortable, sometimes most of you when you have used this kind of things at home background, हमारे बिल्डिंग के ग्राउंड पे हमने खेल लिया ये सब शॉट्स, रिवर्स स्वीप, ऐसा आगे आके ठोकने का, ऐसा सब हमारे मैदान में हम सीखा है. वी कैन डू द डेयरिंग ओवर देयर. सो पीपल हैपन टू रीड द सम, वो दिमाग में ये पूरा ऐसा ये फिट हो जाता है. ये ANI है, इसका वैल्यू इधर दिया हुआ है. सो 5 लाख डिवाइड बाय दिस वैल्यू, वो सब मेंटल में होके उसने आंसर सीधा टिक कर दिया. हम तो बस अभी लिख रहे हैं, then we are putting in value, then we are using the CAFC. So that's somehow, man. If the values come to you, you should be ready to use it. Now coming to the next sum. Raju is investing 20,000 every year annuity in a scheme starting from today. So it's annuity immediate or extra 1 plus I in the formula for 12 years. Rate of interest 7%. Annual hai, he is paying yearly, so rate also need not be adjusted. What will be the future value? Okay, so let's get started. The future value of annuity is the installment what you pay into 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I, and I think nobody should forget it's annuity immediate. Annuity due, so 1 plus I extra. Now 20,000 installment every year, 1.07 raised to 12 years, 12 times he is going to pay yearly installment for 12 years, minus 1 upon 0.07 the I into again 1.07 since it is 1 plus I. Now I really love this. They gave me the 1
1.07 raised to 12 ka value. So on the CAFC, I start. Now I fix in that value which is given to me over here. So 2.25219,150. We need to check it one more time. 25219,150. Okay. Minus 1 divide by 0.07 into 1.07 into the installment size 20,000. That comes to 3,82,812. 3,80.83. So I think so the closest is 3,82,813. No, if you round it to the correct rupee, to the nearest rupee. So 3,82,813 is your option number B. Now that's what I was trying to tell you. They do happen to help you with few values. So you should be using that regularly when you go for this kind of attempts for practice at home. Mr. A invested 20,000 every year for the next 3 years. Okay, every year for next 3 years. Annuity at the rate 8%, of course compounding annually because the payment is what is the future value? So same sum, but it's not starting from today. So we have to assume ordinary annuity where things are happening at the end of every year. So future value is equal to the installment what you happen to pay into 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. So let's put in the figures. 20,000 every year, 1.08, 8% raised to 3 times because it happened for 3 years, minus 1 upon 0.08. Now again this value was given to me. So let's start from here. So it's 1.2597. Need to check it one more time. Minus 1 divided by 0.08 into 20,000, and that happens to give you 64,925. 64,925 seems to be this answer. Of course there is a difference of 3 rupee, but that's the closest possible. Maybe they may have compromised a bit over here from the actual value. So 64,925 is our answer, option number C. Coming to 23rd sum. So simple sums, let's not talk much on that. 10,000 invested every month. Okay, invested every month. Annuity. Month. So 12% per annum has to be now adjusted to monthly rate. So divide by 12, 1%, which turns out to be 0.01. That's my I. And therefore I can see 1 plus I 1.01. What is the future value of this annually just after making 11th payment? Okay, so he's making that 10,000 ka payment every month, but we have to find the future value of annuity at the end of his 11th payment. So he is going to pay 10,000 11 times. Okay, future value is equal to A 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. But did I miss out reading somewhere starting from today? Nowhere. So no extra 1 plus I. So 10,000 installment size going in every month for 11 months. So 1.01 raised to 11 minus 1 upon 0.01. Okay, that value was given to me directly. So let me feed that 1.1156 minus 1 divided by 0.01 into 10,000, and that's 1,15,600, which is my option A. So I think third consecutive same sum. But yes, of course, earlier the sum was annuity due. This is ordinary annuity wherein your payments are going at the end of every month. Sinking fund factor is a reciprocal of what? You may have gone through the theory. This is a new what you can say, new entries in the last few MTPs. We have been seeing this. I am seeing it for the third time. Such kind of MCQ being asked in maths. Sinking fund के sums सबको मालूम है. You have got to attain some target value down 20 years and you start making arrangements from today itself. So from this year end, say you keep aside from your profit of the company a particular amount to reach to the target value. Purpose defined in the sum to sum purposes are different. Maybe sometimes machine replacement, maybe sometimes debentures ka redemption, and etc etc.
Coming back, so if I see that sum, sinking fund ka sum, we have to fix in some no target value given in the question. So this is given to us, future value. You need to achieve the target value by keeping aside a particular amount a yearly. Let us keep it simple, yearly for n number of years. So 1 plus I raised to n minus 1 upon I. And we know that is nothing but, you can say, can I use some other notation over here if you don't mind? Can I say the installment is C right now? So C into A and I. Just discussed few sums back. Now that is my present value, sorry, that is my future value interest factor, the A and I. Now this is my SFV, sinking fund value, let us say, which is the future value. Need to attain that target value by keeping aside amount C every year to year. To get to know what installment you have to keep aside every year from your profits of the company, you need to move this over here. So sinking fund value, the target value, what you need to achieve, divide by A and I, and you will get to know the installment or the amount what you need to start keeping aside year end for n number of years to achieve that target value. Now 1 upon A and I is then termed as sinking fund interest factor, or just simply sinking fund factor, and that gives you C. So what was that? No, 1 upon A and I, if I reciprocal 1 upon A and I, so that term is called as sinking fund interest factor or sinking fund factor. If you multiply with your sinking fund value, you happen to know the installment, which is actually the concept of sinking fund value. To reach to the sinking fund value, what is the installment what you have to start keeping aside from today itself to reach to the target value. So you can get it very easily. The target value multiplied by sinking fund factor gives you the installment what you have to keep aside every day. That all information I came out by just explaining you all this. 1 upon A and I, let's call it as sinking fund factor. Multiply with your sinking fund value will tell you what? The installment you need to keep aside. So sinking fund factor basically is what? It's the reciprocal of future value interest factor of an annuity. We can all see 1 upon A and I is called a sinking fund factor. So it's a reciprocal of what? It's a reciprocal of A and I, which is nothing but the future value interest factor. So sinking fund factor is a reciprocal of future value interest factor. If they give you let me add something over here. If they happen to give you sinking fund factor, you just need to multiply with your sinking fund value, target value. You'll come to know how much you have to start keeping aside year to year from today. That means from the first year end, say. All these are for the ordinary annuities. Now coming to the next one. Okay, 10 years ago the earning per share. अभी EPS सुना तो सब लोग अरे बाप रे क्या अभी ये नया कहाँ से घुस गया time value of money में. No, you just better read the sum. 10 years ago the earning per share of some company was 5 rupees. EPS for this year is 22. Compute the rate at which the EPS was growing. मैं बोला सबको EPS क्यों कर रहा है तू? Why are you giving me unnecessary tension? Rupee 5 becomes rupee 22 in 10 years. I'm sorry. At what rate? Compounding. Okay. So I apply A is equal to P 1 plus I raised to N. The final value is 22. It started with 5 rupee. The earning per share. 1.1 plus I. Sorry. Rate is something what we have to find at what rate. Raised to 10. So I divide 22 divide by 5. Sorry, I divide 22 by 5 and I get 4.4 is 1 plus I raised to 10. Now I don't know how to take 1/10 of a number. So I don't know 4.4 is what raised to 10. So what I say is here I give up.
I go for option. I know this equation has to be satisfied. They all are i's for me. Okay. So if I check the first one, the calculation over here will then go 1.1597 raised to 10. Will it be 4.4? If it is 4.4, then I is 15.97 because I have fit in that rate into my I with 100 dissolved. So it becomes 1.1597. I hope I have made my point right. First of all, okay, 22 out of 5 rupee in a 10-year period. Compounding. So we apply that formula. Final value, initial value 1 plus I raised to 10. Problem is 5 को वहाँ divide कर दिया. But now 4.4 is what raised to 10 I don't know. Because still I don't know 4.5 is what raised to 10, I will not be able to find my I. So I said okay, anyway my calc is not going to help me in finding 1/10 of a power. Because if I push my 10 over here, it becomes 1 by 10. So any number ka 1/10 power raised to 1/10 of a power, I don't know how to work it out. So why not use option? Fix the first I in that 0.1597. So 1.1. So let me work out. If this working turns out 4.4, I really have to say thank you God because first option itself click ho gaya. But this can be worked out very quickly. Mane this many steps you work out quickly and then checking from the option 1.1597 into equal to. For you it's more faster because आपका screen is counting for you 11 तक. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh gosh. I got my 4.4. I got 4.4. So the answer is 15.97%. Hope you must have enjoyed this sum. Coming to the next one. Oh, permutation combination. Now here you can now press the pedal. Any such sums you need to press your pedal. 4 boys, 3 girls. Okay. Sit for a photograph. Alternately. So it has to be B, G, B, G, B, G and B. 4 boys, 3 girls. 4 boys and 3 girls. Cannot start with G. Because then GB, GB, GB. And then what about the last B? He can't be with the B because they have to sit alternately. So again you're going to push him aage. So the arrangement will be always this way. Okay, 4 Bs in 4 chairs. 4 factorial. And 3 G's in 3 chairs. 3 factorial. So 24 into 6. 24 into 6. That's going to be 144. Option number C. 30 points in a plane, out of which 5 points were collinear. Sir, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. 5 points lie on a same line. So 5 points were collinear. How many triangles can be formed? Okay, to form a triangle, you have to select 3 points. See, in the galaxy of, or maybe galaxy, ज़्यादा बड़ा word हो गया. On a plane, you have got 30 points. Let us say on the whiteboard in the class here, no, you have 30 points. To draw a triangle, you are going to select, no, 1 point, 2 point, 3 point. Let me draw the triangle. So that means it turns up selecting 3 points from 30, which happens in 30C 3 ways. So it's going to be 30, 29, 28 upon 3 factorial, which is 6. So it's going to be 6 5. So thoda bahut basic I worked out. 5 into 29 into 28, that turns out 4060. That's not the answer. Oh, don't mark your D. Don't mark your D. In this 30 points, 5 were collinear. And in those 5 collinear points which you didn't took it as collinear up till now, you calculated how many triangles. In, let us say you had a set of 5 points. How many triangles you might have drawn in that? For every triangle you must have selected 3 points. So it's again nothing but selection of 3 points in that 5 points. So 5C3, which of course you make it 5C2, which is 5 4 upon 2, that's 10. So these 10 triangles which are already counted in 4060, which were not supposed to be because all these 5 points were in one line. So you can't make a triangle out of it. But you made 10 triangles in this calculation. So you need to remove from that. So answer then turns out 4050. I hope you all understood that. NPR दिया है, NCR दिया है. And I know the relation between NPR and NCR. To arrange R items out of N. That's NPR ways. We need to first select R items out of N. And then arrange those R items into R places in R factor. Like the 4 boys in 4 chairs, 4 factorial. So this is how I always attach a subject. I always attach a subject with the formulas as to how the formula is built up.
Did you think in this way? Let me try once again. Let me try once again. No, कोई song नहीं है. It's the logic behind no solving this. How the relationship is built. It will be very sad on a part of a student if he doesn't know this. But still, let me not go into that area. To arrange R items out of N. So you better work out NPR because it gives you arrangement of R items onto N places. You need to first select. So I said C. R items out of N. And then those R items will be arranged into R places. R factorial ways. So now let's push in 1024 126 into R factorial. So I'm really sorry, this is 3024. When you will receive the file, you will get all these corrections. Don't worry about it. But right now we are live, so correction I need to make it in the video itself. 3024. So that is 3024. So 3024 divided by 126. 24. I had a sigh of relief. So उसमें relief क्या था? No, because it is R factorial, सामने का value has to be a factorial value, which I know 24 is 4 factorial value. So I got my R is 4. Now let's push our R over here. So NP4 now is 3024. Initially NPR was 3024, but now because I know R, so I say NP4 is 3024. So rather going for a working of n, n minus 1, n minus 2, oh gosh, no, 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 no. You have the option with you. Now you can circle out no few options. As in if somebody is smart, he would say option A is the answer because R4 is only in option A. And there is no option reading below none of the above. So there is no risk also. You can straight away tick that. But let us say I am at my home, so I want to check my n also. So then check your n as 9. Mane, let's put 9p4. If we get 3024, it's correct. So 9p4 you work out in what way? 9 into 8 into 7 into 6. 3024. Okay, it's done. 9p4. 9 and 4 is your answer for N and R. Option number A. Coming to 29. We have got 5 digits. 5 digits. We need to make a 3-digit odd number. So this place has to be filled by 5 or 7 or 9. So that is 3p1. I hope you understand 3p1. We have only one place, but available digits are 3 who can come over there. So 3p1, which is 3 ways. Either 5 comes or 7 comes or 9. But what about my next 2 places? Read. Repetition is allowed. So this place can be filled in 5 ways. Any of this can come over there. Repetition is allowed. Even this place can be filled in 5 ways. And the last place, though, we decided it can be filled in 3 ways. So 25 into 3, that's 75 ways. Wow. Now, simple function ka sum. They are giving me fx as x square minus 5. They ask me to find f3. See, normally when the domain is not mentioned, domain is the x values for which the function happens to exist. Or in layman's language, what all x values are allowed to go into this function. So I say because nothing was mentioned over here, all x coming from real values can go in that. So functions defined from minus infinity to plus infinity. That's the basic understanding. But let's not talk. F at 3. I need to find f at 3. So push your x3, 9 minus 5, that's 4. In fact, once again a smart alert student. Now this all we sit and learn not during the course of doing the topic. That time we are trying to understand how to solve the sum or the basics around the sum or around the chapter. So we don't focus on tricks. But over here when you are attempting this kind of MTPs and past papers, you learn all these things. If you are alert, f at 3 turned out 4 and only one of the options starts with 4. So answer was C. Because none of this, अगर यहाँ none of the above होता, then I cannot take a chance. It is quite possible के 3 out of 4 values may match and the 4th value may not. So the option answer correct was none of the above. So in that case I had to solve all 4.
But right now I have finished my sum, but I would like to carry on with the same sum, finding the other values. F at minus 4, so push your x minus 4. It's going to be 16 minus 5, that's going to be 11. Oh wow. Now f at 5, that's the question, so push in 5. 25 minus 5, 20. Okay, wow. And last, f at 1, so 1 minus 5, that's minus 4. It's done, option number C. But I got option C well before finding the last 3. Let me recollect. F at 3 I got 4 and only one of the option was starting with 4, that was option C. So I said let me tick mark the answer. I have saved some time by my alertness, not smartness, alertness. So I could utilize in some big sums. That's how we compensate. Fifth term and eighth term of a GP series. Okay. GP starts with A, the next is AR, the next is AR square. So we go into R to reach to the next term. But we can see the third term was containing 1 R less. So that's how we work out. So when I am solving for fifth term 27. So AR4 is 27. It's not AR is to 5. 1 R is always less. Can you see that? The T3 is AR square. So AR is to 4 is 27. And the AR is to 7 is 729. The eighth term. So AR is to 7. Let me divide with AR is to 4. So over here 27. A gets cut by indices R cube. 7 to 9 divided by 27. Few could have done orally. 27. R is 3. Push the R over here. So A into 3 raised to 4 is 27. So A is 27 upon 81. Now if you go 27 divided by 81, you get a real ugly value 0.333. You can't do that. You could have done it manually. A is 1 upon 3. 9s are 3, 9s are 9 and 1 by 3. So A is 3 and R is 1 by 3. What are we supposed to find? 10 term AR raised to 9. So let me push A ka value 1 by 3 and R ka value 3 raised to 9. So 1, 3 gets cut. So it's 3 raised to 8. So now it's 3 into equal to square. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 5, 6, 1 is the answer. Option number D is your answer. Oh wow. If you solve by textbook method, it's going to be lengthy equation working. What I do is, it talks about AP, Pth term and Qth term. So let me call 1 and 2. So now I start reading. I'm so sorry. I start reading. TP is Q. So I say the T1 is 2. TQ is P. So T2 is 1. With that I got the information the D is minus 1 because it's AP. They are saying it's in AP. With D minus 1, if I progress one more, I can reach to T3, 0. Now you may ask a question, how? D was minus 1 and to jump to next terms in AP, you have to keep adding D. So on 1, when I add my D minus 1, I'll reach to 0. I don't know why I have found T3. I say it only. Now they are asking me T of P plus Q. As per your values of 1 and 2, they are asking me T3. T3 is 0. It's option A. I was a bit fortunate. I found T3. It happened accidentally. D minus 1 आया तो excitement में और एक term ढूंढ लिया मैंने. Now, just a small brief. All the in-between terms of GP are called as geometric means. So, like let us say if I just put up a simple GP sequence. Now, he is called the geometric mean of 2 and 8. Now we do understand B square is AC. 16 and AC also is 16. So B is called as the geometric mean and therefore B is under root AC. I think we have just in this attempt, in this series ka discussion. Earlier हमने mean proportion में we have happened to use the same thing. But coming back over here. So they call this as the geometric mean. He's in the center. So all in between, like if I have got 16, if I have got 32,
All this in between terms are called as geometric mean. Like 8 is a geometric mean of 4 and 16. 16 is a geometric mean of 8 and 32. So all in between terms, they are called as GM. If you want to check, you can always check. The B square is A into C. B square is going 64. AC is also going 64. So 8 is the geometric mean of 4 and 16. 4 is the geometric mean of 2 and 8. So, okay. Now coming back to my sum. I have just disturbed the question. Okay. Now, we have to fit in 4 geometric means between 4 and 972. So, 4 geometric means. So, if they have to be called as geometric means, this entire sequence has to be then a GP sequence. If it is a GP sequence, then I can see my A, I can see my T6. Okay, just check it, it's T6. So I can see AR raised to 5, 1 hour less than the term number is 972. I put in my A, 4R raised to 5 is 972. So 972 divided by 4 and that gives me 243. Which because I've done my geometric progression nicely and indices also nicely in my early days of foundation, I know that is 3 raised to 5. So I got my R is 3. And once you know R, you have to just keep multiplying by R to reach to the next term in GP. So into 3, into 3, into 3, that's 108, and into 3, that's 324. So 12, 36, 108, 324 are the geometric means between 4 and 972. Quite easy sum, but I hope you all understood. All in between terms, they are called as geometric means if the sequence is a GP sequence. Or we can say to call them as geometric means, we need to call the entire sequence as a geometric sequence. Similarly for arithmetic means also. If 4 terms in AMs, 4 AMs had to be fit in between 2 terms. And those 6 terms have to be then AP. Only then the center 4 terms will be called as AMs. Because they are actually the means of one piche and one aage ka. There's something more to it. But some other sum may, if I get a chance, I'll be talking on that. Coming to subsets, let me discuss thoda sa briefing before we start with the sum. It helps for students who have lost the touch of sets relation function. Let us have taken a set 1, 2, 3. Set A contains elements 1, 2, 3. And I want to draw subsets of this. Draw means actually form the subsets. So मैं एक खाली bracket बनाया. No element in that. As many of you may be knowing, null set also is a subset of a given set. Then we can bring in 1, then we can bring in 2, we can bring in 3. Yeah, I requested 1, 2 and 3 to come in solo. Now I can request them to come in pairs. So I have few more subsets which I can draw. 1, 2 coming in, 1, 3 coming in, and 2, 3 also coming in. I may also request all 3 to come in. 1, 2, 3. So in all we have got 8 subsets. Now it was possible to manually draw the subsets because I had put in only 3 elements. But the same 8 answer could have been arrived by using 2 raised to n, where n are the number of elements in a given subset for which you are writing the subsets of. So as in right now, I have got 3 elements in my set A. So if I work out 2 raised to 3, it's going to be 8. Can I talk a bit more on this? ये 2 raised to n आया कहाँ से? It's like, look at the first line what I said. मैं एक सेट बना के खड़ा रह गया और फिर एक ए में से सबको पूछा आता है क्या सर, किधर आने का, वो इसमें वो सबसेट का मैं वो सेट का बनाया थैली सा और वो 1, 2, 3 को पूछता है आती है क्या, तो वो लोग बोलते हैं आते, हर एक के पास गया आता है, तो वो 2 ऑप्शन देते हैं मेरे को, आता है नहीं आता है, whether he'll come or he'll not come in my subset का bracket में, no in my subset का set. So each of these 3 elements were giving me 2 options. I'll come, I'll not. So sometime 1 came, sometime 2 came, sometime 3 came, sometime 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 सब आ गए. So each element was giving me 2 options. So 2, 2, 2. Now this what I said was FPC, fundamental principle of counting. So each element giving me 2 options, I'll come, I'll not.
So 2 into 2 into 2, it's 2 raised to 3, 8. So 2 raised to n. If I have got n elements in the set, it will be 2 raised to n. So 8 are the subsets which can be formed. More talks on that. If they ask me proper subsets, I have to discard this one because this is the set itself only. Proper subset बोलेगा तो मन में क्या आता है उस set का हिस्सा. So they are called as proper subsets. So this 7 are called as proper subsets. You have to subtract the 1. Which one you subtracted? The last one wherein the set itself had become a subset. What if they ask me non-empty subsets? Then I have to cancel this one. And then the remaining 7 will become the non-empty subsets. And they can club the word non-empty proper subsets. तो ऊपर से भी एक निकाल दो तो non-empty वाला empty वाला गया एंड नीचे से भी सबसेट सेट निकाल दो सो आपका बीच में रह गया non-empty proper subset. So can I recollect once again? To find the number of subsets you'll be going 2 raised to n. हर एक को जाके पूछेगी आती नहीं आती आती नहीं आती n elements, each of them give me 2 options, FPC 2 into 2 into 2 going up till n times, so 2 raised to n. That many subsets. Out of which the first one is an empty subset, last one is the set itself. So if they happen to ask me get the number of proper subsets, so first I'll calculate 8 and then I'll remove the last one. Proper subset चाहिए ना, पूरा set तो नहीं चाहिए. So 7. Non-empty subset तो ऊपर वाला काट दूंगा. 8 में से एक गया. So remaining 7 were non-empty subsets. Non-empty proper subset ऊपर से एक नीचे से एक हटाना है. So answer would be 6 in that case. Now my NA is 5. Sorry. I'm really sorry, 6. I didn't see the 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements. So number of subsets formed will be what? 2 raised to n. So it's going to be 2 raised to 6. It's going to be 64 subsets. So I've got my option A. Sorry to discuss more on the subset sets. I always like to talk thoda sa about the background of the sum. You can always press your forward button in that if you are already aware of all this. Number of proper subsets in A intersection B. So first of all, A intersection B, we need to make a set. Okay. Common between A and B. I can see 2, I can see 4, I can see 7, and I can see 9. So in my set A and B, I have got 4 elements. How many subsets? 2 raised to n. I can make 16 subsets. But they wanted me to draw proper subsets. So आखरी वाला set निकालना होगा, the set itself. So remove 1. 15 other proper subsets in this. Okay, derivatives. I love this. No much of thinking while solving. But here there is. Rather applying UVW rule, the triple product rule. Why not open the bracket and make it a simple polynomial which can be differentiated by anybody? So I am going for my y ka simplification, my function ka x into x square minus 3x plus 2. Opening the first two brackets. Then putting my x in, because even if I go derivative here, I'll be applying a product rule which I want to avoid. So again more simplification goes x cube minus 3x square plus 2x. So the dy by dx happens to go, no discussion left now, 3x square minus 6x plus 2. That's your first answer. Option A. Okay, integration, basic integration. So people who are opting out of derivatives integration need to remember that these are the areas which 99% turns out to be takeaway for free sums. And because you have not taken efforts of doing derivatives integration, for what reason I don't know. Anybody anywhere saying this kind of thing, don't do integration derivatives, you're putting at stake 5 to 6 sums. And for those students, I feel then functions relation also will be a daunting task. क्योंकि उनका वो फ्लेवर ही नहीं है ना, they don't like functions. इसके लिए derivatives integration सब छोड़ने का है. Let me share with you, it's all basic derivatives integration. So need to give a thought if there is some time left. Now coming back, integrating. Okay,
So I need to integrate 3x square and then 2x and then k, all with respect to x, between of course the two limits that we'll see later on. So 3 khada hai, x raised to 3 upon 3. I am playing x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then again I have got power 1, so again 2x raised to 2 upon 2. Then I got dot 1. So k being a constant, he'll be going aside, and 1 on integration will be x. And I need to take it from 0 to 1. So 3 gets cut, 2 gets cut. So I make 2 dabbas, one for the upper limit, another for the lower limit. Okay, 1 coming in, 1 plus k. Check please. And then 0 coming in, so I can see 0 plus 0 plus 0 going in all three terms. And that's equal to 0. I'm really sorry, it was given to me. So 2 plus k is equal to 0. The k has turned out equal to minus 2. So option C is your answer. Now coming to next, maxima minima. Now just a brief about the steps. Let us say that's my x-axis, that's my some function y equal to some function of x. That's the point of maxima, that's the point of minima. So they are asking me it happens where, it happens where. At what x you happen to see maxima, at what x you happen to see minima. Now at this points, since in the curriculum of foundation you also have got that increasing decreasing stuff. So no, here my f dash is positive, here my f dash is negative. Let me put some more light. This is for those who have not gone so deep into this, or not that much they have gone into this. In this part of the curve, my dy was positive. What is dy? F dash means dy. The change in y was because I was climbing the y. So every next y was more than the previous y. So the dy, the change in y will be positive. But when I am going down the slope, my dy turns negative. So karke I wrote f dash is negative. So what will be happening over here at the point of maxima? The f dash will be going 0 at that point. The dy will be going 0 because y stops at that point. He stops increasing and now he starts decreasing. So at that point the y stops. So the dy will become 0. There will be no change in y. Similarly, at no point of minima also your f dash is going to become 0. Now coming to solution, I have got fx 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10. Okay. Now I'll prepare few things, f dash f double dash x. Now you may be thinking, अरे सर ने तो f dash का बात किया था, अभी f double dash क्यों करने बैठ गया? देखते हैं ना, that's the second derivative. 6x square minus 30x plus 36. Quick derivative, simple. Again differentiating, so 12x minus 30. Now I'll equate my f dash x to 0 because at the point of maxima and minima, the f dash happens to go 0. The dy happens to go 0 because the y stops over there. So I am so sorry, 6x square minus 30x plus 36 happens to go 0. I got a chance of dividing by 6. So x square minus 5x. I can't lose out such chances. Now splitting the middle term 2, 3. Any bacha could have done that. School kid. Minus minus. X and x. So when you equate them to 0, you get the roots. X is 2 and x is 3. So I got 2, 3. So you may be quick on 2, 3. Maximum at 2 and minimum at 3. No, it can be the other way around. The curve could have gone in this way also. No, min at 2 and max at 3. Or it can go this way also. Max at 2 and min at 3. So we are not gods to come to know without drawing the graph कि क्या हुआ. It can go max at 2, min at 3 or vice versa. It can go the up पहला वाला curve or it can go the second curve also. To decide at 2 was it maximum or minimum, or at 3 it was maximum or minimum, we have got second derivative test. So I'll just put the test, not so much details on that. So now can I just make a space?
So that much is there in my hand right now. At 2 and 3, the function is showing the no maxima minima. But where actually maximum, where actually minimum, I don't know. It can be max at 2, sorry, max at 2, min at 3, or it can be min at 2 and max at 3. So to figure out that, we use no double derivative ka test. How? We put 2 in double derivative. So it's going to be, I'm so sorry, I've just rubbed my f double dash x, which is 12x minus 30. So 2 going in over there, 24 minus 30 minus 6 negative. So function is maximum at x equal to 2. If double dash happens to go negative, then function becomes maximum at that point. And similarly, we put also 3 in this, which is actually not needed in foundation. Because once you got kids max at 2, of course it will be min at 3. You cannot have two peaks in a function. Two chotis नहीं हो सकता है, two troughs नहीं हो सकते हैं. So this can be avoided, but let us work it out. 3 going in your f double dash x is 36 minus 30, turns out plus 6 positive. So if double dash goes positive, then function is minimum at x equal to 3. So max at 2 and min at 3. We were supposed to find in a sequence minimum where and maximum where. So minimum at 3 and maximum at 2, option A. It is very tight because the next is 2, 3. और आप वर्किंग भी 2, 3 कर रहे हैं. हो सकता है बी मार्क किया. सीक्वेंस पढ़ने का ना कि they asked us min where first and max where afterwards. So minimum at 3 था and maximum at 2 था. So 3, 2 is the answer. Can I recollect the last part? Once you got 2, 3, the only question now to be answered was, is it maxed at 2 and min at 3? Okay, min at 2 and max at 3. Is it this curve or this curve? So we don't know that. So we apply second derivative test. You put 2, 3 in double dash. You put 2, it turned out negative. It's max at 2. You put 3, it turned out positive. It's min at. So negative. It's opposite words ka jalli. So I'm not going to discuss why ऐसा हो रहा है, because then it's going to take a lot of time. Of course, in the lecture, student has to ask me that. Oh, ऐसा कैसा होता है? Few curious students happen to ask. So now, coming to the next one. See, I say again and again. If this would have been an attempt का question, you would have really repented. अरे क्या यार, थोड़ा मैं इतना सारा मैं मैथ्स किया, इतना सारा अदर सब्जेक्ट्स किया, ये थोड़ा सा क्यों छोड़ दिया? And 5-6 questions really make a difference. And now why it makes a big difference? Because they come intermittently. It's not going to come in as the last sum. See, your MTPs as of right now, the day I am discussing with you, till date MTP is still put to you when you go in the designated centers to appear for MTPs, or the provisions there. You can work it out at home also, download the paper and work at home also. The questions are lined up as per the topics only. You will not see time value of money के बीच में एक permutation का sum घुस गया derivative, but in the exam it has changed. It's very random. Any sum, any time. In 100, I'm not talking maths. 4 सम मैथ्स का या 2 सम स्टैट्स का आ गया, फिर 1 सम एलआर का आ गया. So intermittently, when you are leaving some easy derivatives integration का sum, it really plays on your mind in that time zone of 2 hours. और जब होता है, when you work quickly on that, you get that push, rush of adrenaline, blood, chal, bhag. So integrate 3x square. Fine, let me integrate first. So integration was simple. 3 is just constants. When they are attached with the function, while differentiating, integrating, they are just a mere spectator. They are just put by the side. X square on integration goes x3 by 3. Wonderful. And then we have to take it from 0 to 2, and that is the reason why I didn't say plus c in this.
because in definite we do happen to avoid writing C, because in both the dabbas the C after appearing will cancel out, as in dabba minus dabba. So 2 going in 8 and 0 going 0, answer 8. So option number C. Now 40, the last question of my maths, coming in 60 questions LR stats. But now coming back to this question, let me just put one point over in integration. We happen to say in integration x raised to n is, no, when integrated with respect to x, it's going to be x raised to n plus 1 upon n plus 1. Fine, plus some constant. But this formula can be stretched a bit more also. If your x is replaced by some linear, let us say px plus q, some linear form, you can still apply the same formula, px plus q, the whole raised to n plus 1 upon n plus 1. But then you are supposed to divide the answer by the coefficient of x. That extra effort you need to take if you are taking this liberty provided to you in integration. What liberty? I am not talking about only x raised to n ka formula. Any formula of integration, if the x is replaced by some other linear form of x, माने उसी का जाती. See, x is a linear and px plus q also is linear. So in place of x you happen to see px plus q, some other linear form. You apply the same formula, but towards the end in the answer, do not forget, I would insist, do not forget to divide by coefficient of x. So let's do it. So now I was supposed to integrate 2x plus 3 the whole raised to 5. So we take it as x. What if x raised to 5 hota? 6, 6. So 2x plus 3 raised to 6 upon 6. So we have taken the liberty provided to us in integration, wherein the x was 2x plus 3 was taken as x, because दोनों linear form ही है. But then they said this extra liberty comes with extra cost. You need to divide the answer by the coefficient of x, 2, plus some constant. So it's going to be finally 2x plus 3 raised to 12, raised to 6 upon 12 plus c. So that's going to be your option C. I hope you all must have enjoyed working 40 sums along with me, or maybe you just went past through the 40 sums, you are waiting for another 60 sums to go. Even that's a good idea. I'll just go through quickly whatever ये दोनों मिलके बकवास कर रही, दोनों मिलके, मैं और मेरा फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, वो कब से नॉक कर रही है, सर जी क्या टाइम बोला और क्या टाइम तक लेके गए. अब उनको मैं कैसे बोलूँ कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड और सम्स का भी डिस्कशन करते हैं, हंसते हैं, बट ठीक है. So he is eagerly waiting for me to get out of this studio, and he will take it the charge. Till then everybody, namaskar. See you all for the next series. Next series in the sense same June 23 coming in series 2. Till then everybody, bye. You are not supposed to leave the video immediately. My colleague is joining you for the next coming 60 sums. Bye everybody, and all the best for this paper. Not for that. I hope you are solving many more attempts, many more MTPs and many more attempt ka papers after this one also. So bye everybody. Namaskar. Hello friends, this is your Professor Vaibhav Karia, and I will be taking today the paper of June 2023, the mock test paper 1 series of June 2023. I hope आपने सर का मैथ्स का वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा, ठीक है. और यहाँ पे हम आज ही डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. तो सबसे पहला जो आपका पार्ट आएगा बेटा वो लॉजिकल रीजनिंग का आएगा, फिर स्टैटिस्टिक्स का आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एलआर फर्स्ट. आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 41 पे, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे. सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे जैसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था. हम लोग ने पहले भी वीडियोस में इसके क्वेश्चंस देख चुके हैं. आइए फटाफट साथ में खत्म करते हैं. क्या बोलता है क्वेश्चन? इफ गुडनेस is written as HNPCODTR. तो एक एक लेटर आप लोग देखते जाइए. देखो वो लेटर्स आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं. तो वर्ड एंड कोड आपको गिवन है. तो GH, तो कहने से 0 लेटर्स हम लोग आगे की तरफ गए, G से H आगे हो जाएगा. वैसे ही LMNO,
तो ओ एन नहीं होता है, एनओ होता है। तो ये ओ से एन में जीरो पीछे गया, जीरो लेटर्स में पीछे की तरफ गया। अब यहां पे भी वापस ओपी है, राइट, तो ये एल एम एन ओ पी, तो ये वापस में जीरो आगे गया। तो बेटा इधर जो पैटर्न दिख रही है वो पैटर्न क्या बन रही है, जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे जीरो पीछे। लेट्स सी क्या वही सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। डीसी तो जीरो पीछे, एल एम एन ओ तो जीरो आगे, फिर ईडी वापस जीरो पीछे, पीक्यू आर एस टी जीरो आगे एंड जीरो पीछे। जैसे कि आपको बोला था ये पैटर्न देख लीजिए, जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे जीरो पीछे। तो वैसे ही ग्रेटनेस विल बी रिटन एज क्या, तो ये सेम जो ऊपर हम लोग ने पैटर्न लगाई थी वो सेम पैटर्न हम लोग को यहाँ पे चिपकानी है, जीरो आगे जीरो पीछे की, राइट। तो जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे जीरो पीछे, राइट, जीरो आगे जीरो पीछे, जीरो आगे। सो लेट्स सी जी से जीरो आगे क्या आता है, तो ऑब्वियसली जी से जीरो आगे आता है एच, सारे ऑप्शंस में एच है ही है। आगे देखते हैं पी क्यू आर, इधर जीरो पीछे है तो आर से पीछे आ जाएगा क्यू, तो एच क्यू, तो दूसरा लेटर भी आपको क्यू दिख ही रहा है। ई एफ तो एच क्यू एफ, मतलब ये तो ए ऑप्शन गया, नीचे के तीन कोई भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा ना आपको दिमाग देता हूँ, पूरा सॉल्व करने को मत जाइए, टाइम भी बचाने का। देख एग्जाम में इजी चीज है तो टाइम भी बचा। ये देख लास्ट लेटर एम है, आर है, टी है, तो डायरेक्टली अपन लास्ट लेटर देख लेते हैं। एस से जीरो आगे तो क्या आता है, टी, तो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। चीटिंग, हाँ ना, क्यों टाइम पास करके पूरा फाइंड आउट कर ले जबकि तेरा आंसर डायरेक्टली आता है। चाहिए तो एक बार देख भी लेते हैं, डी ऑप्शन ही रहेगा। ई से जीरो आगे एफ हो गया, ए से जीरो पीछे ना, देख ए से जीरो पीछे जाना है, पीछे। अब लोग बोलने का नहीं ऐसा कि ए बी सी डी खत्म नहीं आता है, जेड आता है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है, राइट। टी यू एल एम एम एन ई एफ एंड एस से पीछे आर, तो देखो बन गया एच क्यू एफ जेड। आप डी ऑप्शन भी देख सकते हो, पूरा का पूरा मैच कर रहा है। क्वेश्चन 42, सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 42, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये वापस क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ टूर is written as 1 2 3 4, clear is written as 5 6 7 8, spare is written as 9 0 8 4 7, तो टीयर्स विल बी रिटन एज क्या। अभी आप देख सकते हो कि वहां पे एक, यहाँ पे एक कोड मिसिंग है 5 6 7 8 क्या, पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी R4 है, यहाँ पे भी R4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी R क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ये इंस्टीट्यूट ने सेम चीज दिया है, वही चीज हम लोग ने भी रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने कोड आधा अधूरा दिया आपको। अब टीयर्स का कोड कैसे फाइंड आउट करने का, तो वो लोग ने टी को क्या बोला है 1, तो आप लोग भी क्या बोलेंगे 1। ई को क्या बोला है 7, तो यहाँ पे भी 7। ए को क्या बोला है 8, तो यहाँ पे भी 8। आर को क्या बोला है 4, तो यहाँ पे भी 4। एंड एस को क्या बोला है बेटा 9, तो आंसर आ गया 1 7 8 4 9, ऑप्शन। इसको मैं मैपिंग के क्वेश्चन बोलता हूँ। वो लोग ने सी को 3 बोला तो तू भी 3 बोल दे, बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 43, सेम चीज जो ऊपर की थी वैसी चीज वापस नीचे, मैपिंग का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। रोज इज रिटन एज 6 8 2 1, चेयर इज रिटन एज 7 3 4 5 6, preach is written as 9 6 1 4 7 3, तो रिसर्च विल बी रिटन एज क्या। अब देख यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूं, पर बेटा एग्जाम में ना पूरा नहीं लिखने का, फटाफट फटाफट देख देख के खत्म करने का, ठीक है। तो रिसर्च तो आर ई, तो आर है 6, ई है 1, तो 6 1। एस ई है 2 1, देन वी हैव ए आर, ए इज 4, आर इज 6, सी एच इज 7 3, तो आपका कोड बन गया 6 1 2 1, so 6 1 2 1 6 1 2 1, ओके। 4 6 7 3, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन। सारे के सारे 10-10 सेकंड के क्वेश्चन अभी तक जितने भी आप लोग ने किए एग्जाम में भी दिखते हैं। भगवान को थैंक यू बोलने का, थैंक यू भगवान, बहुत इजी था, 1 मार्क फ्री में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज पे, ये वापस आपके सीरीज चैप्टर में से वो कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आपका दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर था, ये पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर में से है अल्फाबेटिकल सीरीज। सो क्या बोलता है, फाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज इन द गिवन ए एल एन डी एन पी जी पी आर एंड क्वेश्चन मार्क। आपको इसको वर्टिकली सॉल्व करना है
और देखना है कि कितने लेटर्स का गैप यहाँ पे हुआ है, राइट। सो ए से डी, तो ए बी सी, राइट, तो ये दोनों के बीच में कितने लेटर्स है, 2 लेटर्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 आगे, बी और सी स्किप हुआ ना, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 2 आगे, राइट। फिर यहाँ से डी से जी, ई एफ, वापस यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 आगे। तो जी से भी क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 2 लेटर्स आगे की तरफ आ जाएंगे, जी। सो एच आई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जे। और जे से आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप मार्क भी कर सकते हो। तो ये हो गया जी आर टी, ऑप्शन बी। पर सर मुझे सॉल्व करना है, तो कर लो एक बार, आपकी तसल्ली के लिए वो भी कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ। तो एल से एन, तो जे के एल एम एन, तो एक आगे, एन ओ पी वापस एक आगे, पी क्यू आर वापस एक आगे, हो गया ना, एक आगे की पैटर्न। यहां पे भी आपको देखते रहना है कि कौन सी पैटर्न बन रही है। फिर नेक्स्ट वन, एन पी आर टी, एल एम एन ओ पी, तो वापस एक आगे, पी क्यू आर एक आगे, तो वापस पैटर्न क्या बन गई, एक आगे की। तो आर से एक लेटर आगे एस, और यहां पे आ गया टी। नहीं देखते तो भी चलता, इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। चलो क्वेश्चन 45, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, 2 5 10 17 26 एंड अ क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली आप प्लस के एक बार गैप देख लो, आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी में इजी क्वेश्चन है ये देखो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 9 26। तो ये देखो पैटर्न क्या बनी, 3 5 7 9, तो यहाँ पे क्या प्लस होगा, 11। तो 26 + 11 कितना होता है बेटा, 37। सो 37 इज द करेक्ट आंसर। इजी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। एग्जाम में हार्डली ऐसा क्वेश्चन दिखता है, सच्ची में बोलता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये नंबर सीरीज का। आ जाओ, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑड वन आउट। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, अभी वापस बोलता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग टर्म एंड ऑड मैन आउट। कैसे पता करने का, रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है कि ऑड मैन आउट का, ऑड मैन आउट में रैंडम नंबर्स रहते हैं और पैटर्न नहीं बनता है। रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में या तो असेंडिंग सीरीज जाती है या तो डिसेंडिंग सीरीज जाती है, और एक नंबर गलत रहता है और पैटर्न भी बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें पैटर्न बन रहा है। देख मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर तो दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, 34 105 424 2125 and 12755. As I have said, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है, जी हाँ बिल्कुल। तो अगर नंबर अचानक बढ़ता है तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन ट्राई करके देखने का। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि प्रीवियस नंबर यूज किया और मल्टीप्लीकेशन यूज किया है, कि अब देखो 33 × 3 99 होता है, सो 34 × 3 क्लोज टू 105 होगा। फिर 105 × 4 करोगे तो क्लोज टू 420 होएगा या 425 होगा, जो भी होगा वो। सो यहाँ पे प्रीवियस नंबर और मल्टीप्लिकेशन यूज किया है वो लोग ने। सो लेट्स सी हियर, सो मैं कैलसी यूज करता हूँ। प्रीवियस नंबर है 34, 34 को मुझे 105 के आजू बाजू लेके जाना है, मैं 34 × 3 करता हूँ तो 102 आता है। सो यहाँ पे आई कैन से 34 × 3 it comes to 102, but we have been given with 105 plus 3. प्रीवियस नंबर इंटू 3 प्लस 3 पैटर्न बन सकता है, पहले भी हम लोग ने ऐसा पैटर्न डिस्कस किया हुआ है। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पर वी कैन सी दैट प्रीवियस नंबर इज 105, प्रीवियस नंबर इज 105, 105 into 4. If I do 105 into 4, it gives me 420. मुझे 420 आ रहा है, 420 आ रहा है। तो 420 plus 4 comes to 424 बन गया। देखो into 3 plus 3 into 4 plus 4, तो ये क्या होगा 424 into 5 plus 5 हो रहा है। तो अभी तक मुझे कोई भी नंबर गलत मिला नहीं है। अब 2125 into 6, 2125 into 6 plus 6 होगा, so it comes to 12756। पर हम लोग को दिया क्या है
12755। तो आपका रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया? ए। उन लोग की भाषा में ऑड मैन आउट, अपनी भाषा में रॉन्ग टर्म। क्लियर? चलो क्वेश्चन 47। राम मूव्स टुवर्ड्स southeast at a distance of 7 kilometers. Then he moves west and travels at a distance of 14 kilometers. From there, he moves towards northwest a distance of 7 kilometers. And finally, he moves a distance of 4 kilometers towards east. How far is he from the starting point? वो starting point से कितना दूर है, हम लोग को ये वो लोग ने पूछा है। अब ये क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में भी वो लोग ने पूछ लिया, राइट। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बड़ी दिशा एंड छोटी दिशा दोनों का मिक्सचर आता है, राइट। सो लेट्स सी, मैंने आप लोग को सिखाया सबसे पहले प्लस बना दो, फिर उसको चलाओ। तो ये मैंने बना दिया मेरा प्लस, अब मैं उसको चलाऊंगा थोड़ा। ओके, तो सबसे पहले राम स्टार्ट करता है ये सेंटर पॉइंट से, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। तो राम सेंटर पॉइंट से चालू करता है और साउथ ईस्ट में 7 किलोमीटर जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका साउथ ईस्ट का हो जाएगा, यहाँ पे जाता है वो 7 किलोमीटर। ये देखो राम पहुंचा अब इधर किधर। अब जिधर भी वो पहुंचा है ना, इधर एक चाहिए तो छोटा सा प्लस वापस बना दो। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो होगा ना बेटा, ये पॉइंट से होगा, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। ओके, नाउ ही गोज टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स 14 किलोमीटर। तो वेस्ट में, तो वो पॉइंट से वो यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से वो वेस्ट में कितना चला, 14 किलोमीटर चला। तो ये 14 किलोमीटर उसने चल लिया और अब पहुंचा वो इधर किधर। अब यहां से वो क्या करता है, वापस में बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ये पॉइंट का। अब वो क्या करता है, देन ही मूव्स नॉर्थ वेस्ट फॉर 7 किलोमीटर। यहां से वापस वो नॉर्थ वेस्ट में कितना चलता है बेटा, 7 किलोमीटर चलता है और पहुंचता है यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे वो पहुंच जाता है राम। ओके, अब राम क्या करता है 7 किलोमीटर चलने के बाद, नाउ व्हाट डज ही डू, ही मूव्स फाइनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहां से वो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो ये देखो, ये उसका एंड, ये उसका स्टार्ट। कैन यू सी अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम? अब आपसे पूछा क्या है वो लोग ने पूछा है हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी ये दूरी कितनी की होगी। तो यू नो पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये 7 का तो ये भी 7 का, ये 14 का, तो यहां से लेके यहां तक ये भी 14 का रहेगा। और उसने ऑलरेडी कवर कितना कर लिया है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, उसने ऑलरेडी 4 कवर कर लिया है। तो 14 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। और याद रखना एक चीज, देखो यहाँ पे वो लोग अच्छे थे कि वो लोग ने आप लोग को दे दिया था कि वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं ना बेटा, वो लोग बोलते हैं वो साउथ ईस्ट जा रहा है, फिर उसने राइट मारा। तो याद रखने का, बड़ी दिशा का 90 बड़ी दिशा और छोटी दिशा का 90 छोटी दिशा। बड़ी दिशा का 90 बड़ी दिशा, छोटी दिशा का 90 छोटी दिशा। इसका मतलब क्या, अगर आप नॉर्थ में हो ना, तो नॉर्थ का राइट हमेशा ईस्ट ही आता है। दोनों मेन डायरेक्शंस है। पर अगर आप सब डायरेक्शंस में हो तो नॉर्थ ईस्ट का राइट ईस्ट नहीं आता है, साउथ ईस्ट आता है। ठीक है। जैसे कि देखो, मैं आप एक छोटा सा प्लस बना के आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो उसका राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या आएगा, साउथ ईस्ट। मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, फिर मेरा मन किया राइट मारने का, तो अब मैं यहां से किधर जाऊंगा, साउथ ईस्ट में जाऊंगा मैं। क्लियर? क्लियर? तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। चलो आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन 48। पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर्स। तो कैरम खेल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कैरम अपन ड्रॉ कर देंगे। 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं, तो सेंटर में बैठ के खेलेगा ना बेटा। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। बोला है पी आर वो दोनों पार्टनर है एंड एस क्यू वो दोनों पार्टनर है। एस इज टू द राइट ऑफ आर। मेरे को पता नहीं आर किधर भी बैठा है, अब किधर भी बैठ सकता है वो। सपोज आर इधर बैठा है और बोला क्या है, एस इज टू द राइट ऑफ आर। जिधर भी आर बैठा ना, उसके राइट में एस बैठा है बेटा, तो एस आ जाएगा इधर। नाउ यू नो कौन कौन पार्टनर्स थे, पी एंड आर पार्टनर थे। तो आर के एग्जैक्टली सामने कौन रहेगा, पी, एंड एस के एग्जैक्टली सामने कौन रहेगा, क्यू। कितना इजी क्वेश्चन था यार, कितना इजी। क्या पूछा है, इफ आर इज फेसिंग वेस्ट, लो बोलो,
लो बोलो सर अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, चेंज करेंगे वापस। देखा, इसके लिए कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लेना चाहिए। चलो ठीक है, कोई वादा नहीं। आर को अपन फेसिंग वेस्ट कर देते हैं, ये तो मोए मोए मूवमेंट हो गया अपने लिए, है ना। इफ आर इज फेसिंग वेस्ट मतलब आर किधर बैठा है, इधर बैठा है, तो आर के सामने कौन था, वो भी अपने को दिया था, ठीक है। आर का पार्टनर कौन था, पी, और आप लोग को क्या दिया, एस इज टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में, मतलब नीचे आ जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, खत्म। तो बोलता क्यू कौन सा डायरेक्शन में फेसिंग है, नीचे कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है, वो देख रहा है साउथ में, ए साउथ। क्लियर, चलो आ जाओ बात करते हैं इधर क्वेश्चन 49। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ, ये भी वापस मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह चुका है और बहुत लोग इसमें शहीद हो गए थे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहा है वन मॉर्निंग की, एक सुबह की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वन मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो सन किधर रहेगा, सन रहेगा ईस्ट में, सन किधर रहेगा, ईस्ट में, बराबर है, सन राइजेज इन द ईस्ट। बोलता है बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बोलता है एक लड़के ने पता नहीं कोई तो डायरेक्शन में चलना चालू किया, कौन से भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो ये क्वेश्चन में अभी मेरे शॉर्टकट से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा देना और शेयर भी करना दूसरे लोग के साथ। मैं समझाता भी, उसके पीछे का कारण भी आपको मैं समझाऊंगा। बोलता है एक लड़के ने 5 किलोमीटर का सबसे पहले लेफ्ट लिया, स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो सबसे पहले उसने 5 किलोमीटर का लेफ्ट टर्न लिया एंड फिर वापस वो लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर चलने लगा, देखो लिखा एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर देयर आफ्टर ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। तो 5 किलोमीटर का वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, वापस एक 5 किलोमीटर का राइट टर्न उसने लिया। और ये सब करने के बाद उसका एंड कैसे हो रहा है, तो बोलता है he sees his shadow in front of him, और उसको अपनी परछाई उसके सामने दिखी, फ्रंट में दिखी। अब सब इधर दो कंसेप्ट है, वो दोनों कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं और फिर वापस इधर लेके आता हूं। तो जरा अपन ऑफ ट्रैक जाते हैं। सबसे पहले सन इधर है, सन इधर है ईस्ट में, ईस्ट में, और बंदे को अपनी परछाई दिख रही। अब देखो, अगर आप लोग सन को फेसिंग रहोगे ना, सन को, ये मेरा डायग्राम ऐसा ही है पिकासो जैसा, अगर आप लोग सन को फेसिंग रहोगे तो सन की धूप आपको लगेगी, सनरेज आपको लगेगी और आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी ना। क्या आपको अपनी परछाई दिखेगी, नहीं। पर यहां पे आपको अपनी परछाई दिख रही है, मतलब आप सन को फेसिंग रहोगे कि सन को ऑपोजिट रहोगे, ऑब्वियसली सन के ऑपोजिट रहोगे। देख लो, वापस देख लो ना, ये लो, अपने को डायग्राम बनाने में कितना टाइम जाता है। ये लो, अब मैं सन से नाराज हूं, हाँ सूरज से मैं नाराज हूं, उसको ऐसे पीट करके मैं खड़ा हूं, हाँ मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तेरे को, और यहाँ पे अभी भी सन ईस्ट में ही है। अब मेरे पीठ पे ऐसे ऐसा रेज लगेगा, ओ ओ, और जैसे ही रेज लगेगा मेरी शैडो मेरे आंखों के सामने बनेगी ना। तो अब मैं किधर फेसिंग हूं, मैं वेस्ट फेसिंग हूं ना, मेरा फेस कौन सी तरफ है, वेस्ट। यहाँ पे मेरा फेस कौन सी तरफ था, ईस्ट, मैं सन को फेसिंग था, सन इज ईस्ट। तो यहाँ पे वही बोला है, शैडो मेरे सामने बन रही है। ये सब लेफ्ट राइट करने के बाद मतलब मैंने एंड किधर किया, मैं वेस्ट फेसिंग हूं ना यार, इतना समझा, एक कंसेप्ट खत्म। मतलब इधर से आपको क्या समझने का था कि कभी भी आपको अगर अपना शैडो दिखता रहेगा ना तो आप सन के ऑपोजिट रहोगे। नहीं भरोसा है, ओके, सन यहां पे भी रह सकता है, अगर शाम का वक्त रहा तो सन किधर रहेगा, वेस्ट में, प्रूफ दे रहा हूं आपको मैं, तो सन वेस्ट में रहेगा। वापस आप सन को फेसिंग नहीं हो, सन से आप रूठे हुए हो अभी भी, ये लो, तो वापस सन से रूठे हुए तो सन आपको पीछे से रेस देगा, और जैसे वो रेस देगा वापस आपकी शैडो आपके सामने बनेगी ना। तो अभी आप इधर किधर फेसिंग हो, ईस्ट में। ये मॉर्निंग का सिचुएशन था, ये मॉर्निंग का सिचुएशन है, ये इवनिंग का सिचुएशन है, बराबर है, समझा सबको, ओके। अब बात करते हैं इधर 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 बात करते हैं। सर ये तो तूने अच्छे से समझा दिया, चल मेरे को समझ में आ गया, पर ये क्या लिखा है तूने, स्टार्ट लेफ्ट लेफ्ट राइट वेस्ट। मेरे को तो ऐसा पढ़ाया है, मैंने तो ऐसा पढ़ाया है, ऐसा मस्त लेके जाने का, फिर ऐसा बतखगिरी करने का, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर। नहीं, वो सब नहीं, वो रट्टा मारने का होता है, वो लॉजिकली रीजनिंग तुम लोग लॉजिकली पढ़ ही नहीं रहे हो। चलो आ जाओ, अब मैं एक और जादू दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इधर, सोच समझ कर जाओ देना। मैं अभी नॉर्थ में जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, नॉर्थ में, और मैंने मारा लेफ्ट टर्न। तो आप लोग को पता है नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट, मैंने सिखाया आप लोग को, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अब मैं वेस्ट में जा रहा हूं, अब मुझे वापस नॉर्थ में जाना है, तो मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा कि राइट लेना पड़ेगा,
सोच समझ कर जाओ देना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ खुद को, मैं नॉर्थ में जा रहा था, मैंने लिया लेफ्ट टर्न, तो अब मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। मुझे वापस नॉर्थ पे जाना है तो मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा कि राइट लेना पड़ेगा? राइट लेना पड़ेगा ना यार। तो अगर मैं जैसे ही राइट ले लेता हूँ तो वापस मैं नॉर्थ में ही आ गया ना यार। तो कहना इसे एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल। अरे ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो अपन ने पहले भी ऐसी चीज पढ़ी है, आंटी भी भारी नहीं क्लॉक भी भारी नहीं, दोनों कट गए। तो तू जिधर का था उधर का उधर ही ना। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हेलो? ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मतलब एक क्वेश्चन भी चल मैं तेरे को देता हूं। मैं ईस्ट में जा रहा हूं, मैंने लेफ्ट लिया, मैंने राइट लिया, मैंने लेफ्ट लिया, मैं कौन से डायरेक्शन में आके जा रहा हूं? तो क्या करने का? चुपचाप एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल। ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन आएगा? ऊपर, नॉर्थ आ जाएगा, खत्म, गेम ओवर। ये मेरे को है ना तेरे ऐसे तेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरे को प्रूफ करके दे। ये ले डायग्राम भी बनाता हूँ, जो तू करता रहा है रट्टा मार मार के उसमें भी रॉन्ग करता है। मैं जा रहा हूँ ईस्ट में, मतलब मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले मारा लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। फिर मैंने मारा राइट, तो नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। एंड फिर मैंने वापस मारा लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है बेटा? ये ले, कौन से डायरेक्शन में तू जा रहा है? नॉर्थ में। और मैंने क्या लिखा था? ये देख ले, नॉर्थ में। समझा कि नहीं समझा? ये डायग्राम का भी मैं तेरा टाइम बचा रहा हूं। थैंक यू बोल। हाँ, समझा? एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, क्लियर? चलो, अब यही चीज मैं उधर अप्लाई कर रहा हूं, पर इसका थोड़ा एक और पार्ट मुझे तुझे समझाना है। अब ध्यान से देखना, मैं नॉर्थ में जा रहा था, मैंने मारा राइट, तो नॉर्थ का राइट क्या आता है बेटा? ईस्ट। ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये तेरा एंडिंग पॉइंट था। तो नॉर्थ से तूने राइट लिया तो तू ईस्ट में पहुंचा। अब ईस्ट से मुझे नॉर्थ वापस जाना है तो मुझे राइट लेना पड़ेगा कि लेफ्ट लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा। मतलब कहना है कंक्लूड, स्टार्ट टू एंड अगर राइट है तो एंड टू स्टार्ट लेफ्ट होगा, स्टार्ट टू एंड अगर लेफ्ट है तो एंड टू स्टार्ट राइट होगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैं साउथ में जा रहा हूं, साउथ का राइट वेस्ट आता है, मैंने चालू साउथ से किया, खत्म वेस्ट पे कर रहा हूं, राइट लेके मैं वेस्ट में पहुंचा। पर अगर मेरे को वापस वेस्ट से साउथ आना है तो क्या मैं राइट लेके आऊंगा कि लेफ्ट लेके आऊंगा? लेफ्ट लेके। बस वही ये दो लॉजिक में इधर अप्लाई कर रहा हूं, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, खत्म, गेम ओवर। अब स्टार्ट किया पता नहीं कौन सा डायरेक्शन पे, एंड वेस्ट में कर रहा हूं, तो मेरे को अब एंड से स्टार्ट जाना है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो इधर एक राइट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू राइट। तो वेस्ट का राइट कौन सा डायरेक्शन होता है? तो वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, खत्म, गेम ओवर, नॉर्थ इज करेक्ट आंसर। सर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? है ना, है ना, दूसरा रास्ता भी है तेरे पास, डायग्राम वाला, जो बहुत लोगों ने किया था और बहुत लोग फंस भी गए थे, तो घूमते रहते वो लोग। ये सबसे आसान है। देख मैंने खाली तेरे को दो बात समझाई, एक लेफ्ट एक राइट कैंसल, स्टार्ट टू एंड लेफ्ट है तो एंड टू स्टार्ट राइट। अब बात इधर करते हैं, डायग्राम से भी समझा ही देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम, मतलब मैं डायरेक्टली ये नॉर्थ राइट है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब बंदा किधर से चालू किया चलना? नॉर्थ से। सो लेट्स सी हियर, मैं यहाँ से नॉर्थ में बंदे को लेके जा रहा हूँ, उसने सबसे पहले मारा था लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट आता है वेस्ट, बराबर है। फिर उसने वापस मारा था लेफ्ट, तो लेफ्ट का वेस्ट आता है साउथ, तो वो साउथ में चलेगा। फिर उसके बाद उसने मारा था राइट, तो साउथ का राइट वापस क्या आता है? वेस्ट ही आता है, वेस्ट। तो चल किधर रहा है? वेस्ट फेसिंग चल रहा है। अब देख धूप थी मॉर्निंग, तो सन इधर ईस्ट में रहेगा, और ये बंदा यहाँ पे चल रहा है वेस्ट फेसिंग चल रहा है। अब देख उसको धूप लगेगी और उसकी शैडो उसके सामने बनेगी, ये तो सिचुएशन थी। तो उसने चलना किधर चालू किया? नॉर्थ में। आई होप सबको समझा, क्लियर? चल आ जाओ, क्वेश्चन 50। इट्स 3 o'clock इन द वॉच एंड मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो घड़ी में 3 बजे, 3 बजे, और मिनट हैंड किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मतलब इन शॉर्ट 12 किधर बज रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में बज रहे हैं। अरे 0 0 मतलब 12 पे मिनट हैंड का काटा रहेगा ना, तो आ जाओ अपन 12 इधर नॉर्थ ईस्ट में बजा देते, ये नॉर्थ ये ईस्ट ये 12, तो 12 इधर तो 3 इधर 6 इधर और 9 आ जाएगा इधर। अब क्या बोलता है?
देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। तो आ जाओ, 3 बजे की घड़ी बनानी है आप लोग को, बना देते हैं। ये 3 बजे की घड़ी बन गई जब मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में। तो आवर हैंड कौन से डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है बेटा, साउथ ईस्ट। इजी, इजी, काफी इजी सर। आ जाओ क्वेश्चन 51। ये आया अपना फेवरेट क्वेश्चन आया, तो क्लॉक को ऐड, आंटी को माइनस। चलो देखते हैं। मैन इज फेसिंग वेस्ट। सबसे पहले उसने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 इन द सेम डायरेक्शन। तो 180 इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। एंड 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन देख लेते हैं भारी कौन है, आंटी भारी है कि कौन भारी है, देखते हैं। 45 प्लस 180 225 क्लॉकवाइज हो गया, माइनस 270 डिग्री। तो वापस आंटी 45 डिग्री से भारी है, तो वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री पे साउथ आता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ वेस्ट। खत्म, ये इजी। चलो क्वेश्चन 52। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows with 3 persons in each row. Both rows are in front of each other. ठीक है, तो 6 लोग हैं और तीन के साथ जोड़े में बैठे, 1 2 3 1 2 3। और वो लोग ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, दोनों रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब दे आर फेसिंग ईच अदर। तो ये सपोज नॉर्थ में है, तो ऊपर वाले किधर है, साउथ में ऑब्वियसली। अब लेफ्ट राइट भी मार्क कर लेते हैं, तो नॉर्थ वालों का लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा, और साउथ वालों का रिवर्स हो जाएगा ना, तो वो चीज का ध्यान रखना, ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा। अब आप लोग को बोला क्या है, E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रोज। तो E किधर भी एंड्स पे नहीं है, मतलब वो सेंटर में बैठा है। अब देख, एक बात हो सकती है, नीचे भी बैठ सकता है वो, ऊपर भी बैठ सकता है, क्योंकि किधर भी दिया नहीं कि वो नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है। तो अगर तू देखने को जाएगा ना, तो इधर से तेरे 2 अरेंजमेंट बनने चालू हो रहे हैं। चल चाहिए तो साइड में दूसरा बना ही देते अपन लोग, E इधर, ठीक है, वो एक अरेंजमेंट, ये दूसरा अरेंजमेंट। अगर E नॉर्थ फेसिंग है तो ये, साउथ फेसिंग है तो ये। अब क्या बोला है, D इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ F, ओके, C इज द नेबर ऑफ E। C क्या है, नेबर है E का। तो अब देख, वापस C किधर भी हो सकता है, E के राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, क्योंकि नेबर बोला है। समझा कि नहीं समझा? तो सपोज मैं C को इधर बैठाता हूं, ओके। अब आगे क्या बोला है, एंड E, C इज द नेबर ऑफ E एंड डायगोनली ऑपोजिट टू D। और C किधर है, D के डायगोनली ऑपोजिट है, तो मतलब D बैठ जाएगा इधर। अब आपके पास एक लाइन थी, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अब आप लोग बोलेंगे सर F इधर बैठेगा, नहीं बैठ सकता क्योंकि वो लोग साउथ फेसिंग है ना। तो ये उल्टा हो जाएगा, D इधर सेकंड लेफ्ट में नहीं है, सेकंड राइट ऑफ F है। मतलब इन शॉर्ट, तूने जो इधर C को बिठाया ना, C वो बाजू नहीं रहेगा, C है ना C बेटा, C इधर रहेगा। अब देखना ध्यान से, तो C के डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनल में कौन है बेटा, D है। और आप लोग को दिया है D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के सेकंड लेफ्ट में कौन है, D। आप देख सकते हो, साउथ का लेफ्ट ऊपर जो हो जाएगा ना, मैंने उधर मार्किंग इसके लिए पहले से करके रखा। समझा कि नहीं समझा? अब देख आगे क्या बोला है, इफ B इज द नेबर ऑफ F। B कौन है, F का नेबर है, तो इधर कौन आ जाएगा, ये। F हु इज इन फ्रंट ऑफ C, हम लोग ने ब्लड रिलेशन में भी ये डिस्कस किया था कि हु मतलब जो, F जो C के सामने, तो आप वो भी देख सकते हो। देन हु इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू F। F के डायगोनली कौन बैठा है, A, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन C। सर वो अरेंजमेंट का क्या, तो आप लोग उधर भी से भी करते, तो आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है, आप लोग को करना है तो आप लोग वो भी खत्म कर सकते हो। तो FD किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज का, D इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, क्योंकि D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ये लोग नॉर्थ फेसिंग है ना, बराबर है। एंड बाकी सारी चीजें रिमेन्स द सेम। B इज द नेबर ऑफ F, तो B इधर आ जाएगा। F हु इज इन फ्रंट ऑफ C, तो C इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। F के डायगोनल ऑपोजिट कौन है, देखो इधर भी है यार। तो दोनों अरेंजमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं 53। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। तो हम लोग ने ये पहले देखा हुआ है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। सर्कल बना लिया है मैंने, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्या बोलता है, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। तो अपन इधर से ही चालू करेंगे। अभिनव सपोज इधर सेंटर में बैठा है,
तो अभिनव किसके बीच बीच में है? आलोक एंड अंकुर। तो देखो आलोक इधर, अंकुर इधर। पर एक और बात का ध्यान रखना, इधर से भी दो अरेंजमेंट बन सकता है। अगर अभिनव आलोक अंकुर के बीच में, तो ऐसा भी तो हो सकता है अंकुर इधर, आलोक उधर। पॉसिबिलिटी साथ साथ में देखो तो ही जीतोगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में, टाइम बचता है इससे। आगे बोला है अपूर्व इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। ना अपने पास अपूर्व है ना अपने पास अभिषेक है, तो आगे बढ़ो। आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्व। जिधर भी आलोक है ना, वो आलोक किधर है? अपूर्व के लेफ्ट में, अपूर्व के लेफ्ट में आलोक है। तो अभी सपोज देखो, ध्यान से देखना, अगर सपोज मैं आलोक को इधर बिठाता हूं तो अपूर्व इधर चला जाएगा ना, तो ये तो पॉसिबल है। अपूर्व के लेफ्ट में आलोक, देखो अपूर्व के लेफ्ट में आलोक, तो आलोक के राइट में अपूर्व होना चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? पर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लोग आलोक को इधर बिठाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, वो बैठेगा नहीं। मतलब इधर से पता चल गया कि अंकुर इधर रहेगा और ये आपका अरेंजमेंट रहेगा, अंकुर, अभिनव, आलोक और अपूर्व। आपके पास एक और लाइन था, अपूर्व इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अभिषेक के लेफ्ट में कौन है? अपूर्व है। तो देखो अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्व है, तो अपूर्व के राइट में अभिषेक होगा ना, बैठ गया, खत्म, अरेंजमेंट, गेम ओवर। अब क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट। अभिनव के राइट में कौन बैठा है? तो अभिनव के राइट में कौन बैठा है बेटा? आलोक, ऑप्शन इजी। चलो क्वेश्चन 54, पी क्यू आर एस टी आर सीटेड इन अ लाइन फेसिंग वेस्ट। अब फेसिंग वेस्ट है ना, तो वो लोग को आप लोग कॉलम वाइज ही अरेंज करो, 1 2 3 4, पी क्यू आर एस टी और 5, 1 2 3 4 5, वो लोग फेसिंग वेस्ट है। अब सबसे पहले लेफ्ट राइट मार्क कर लो। तो वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ, तो जो लेफ्ट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ रहेगा राइट। ये लेफ्ट राइट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है पर्संस के हिसाब से, ठीक है? तो आप लोग का काम बहुत आसान हो जाता है। जब भी वेस्ट और ईस्ट फेसिंग आएगा ना, तो कॉलमिनर अरेंजमेंट ही करने का वो इजी रहता है, रो वाइज नहीं करने का। आ जाओ, आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड, एकदम नॉर्थ एंड पे कौन बैठा है? आर। एंड एस इज सिटिंग एट द साउथ एंड। ओके, ये तो इतना इजी था। टी इज नेबर ऑफ आर एंड क्यू। देखो अभी आर फिक्स हो गया ना, तो आर और क्यू का नेबर कौन है? टी। क्या बोला है? पी एंड क्यू आर सीटेड टुगेदर, पी एंड क्यू आर सीटेड। कितना इजी क्वेश्चन था। बीच में कौन बैठा है? क्यू। क्यू, तो क्यू बीच में बैठा है। इजी इजी, नॉर्थ एंड साउथ एंड, टी बीच में था और पी नेवर था, क्यू का, खत्म। क्वेश्चन 55, ब्लड रिलेशंस। सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम। ओके, तो सबसे पहले ये करते हैं, सुरेश सिस्टर, धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट करते करते करो। सुरेश की बहन, तो ये सुरेश की बहन, ठीक है? वो क्या बोल रहा है? इज द वाइफ ऑफ राम। और ये जो सुरेश की बहन है ना, ये कौन है? वाइफ है। तो ये किसकी वाइफ है? राम की। तो ये मैंने मैरिज वाला रिलेशन बनाया दो ऑपोजिट एरो से, और ये राम उसकी वो कौन है? वाइफ है। आगे क्या लिखा है? राम इज रानीज ब्रदर, और राम की बहन का नाम क्या है? रानी। इतना इंफॉर्मेशन अपने को उसने दे दिया। आगे दिया, राम्स फादर इज मधुर। राम के पप्पा का नाम क्या है? मधुर। ए मतलब वो रानी का भी पप्पा हो गया ना। ओके, आगे क्या लिखा है? शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। शीतल कौन है? राम की ग्रैंड मदर है। अब देखो ग्रैंड मतलब या तो दादी या तो नानी होती है, पर राम की मम्मी का किधर भी जिक्र नहीं किया है करंटली, तो मधुर की अपन मम्मी पकड़ के चलते हैं, वो कौन है? शीतल। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। किसकी बहू है? शीतल की बहू। मतलब शीतल का कोई तो बेटा रहेगा, वो हो गया मधुर, और उसकी वाइफ का नाम क्या है? रीमा। आगे दिया है, रोहित इज, धीरे धीरे जाना, रानीस, रानी दिख रही है, रानीस ब्रदर, तो राम था और उसका बेटा, तो इन दोनों का आउटपुट कौन है? रोहित। अब आप लोग को सिखा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है पर कितना मक्खन के जैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप लोग हिंदी में सॉल्व कर रहे हो, हिंदी में सॉल्व करना सीखो। हु इज रोहित टू सुरेश। सुरेश के हिसाब से, हमेशा पीछे वाले के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को देखने का, सुरेश के हिसाब से रोहित उसका क्या लगता है? तो अब देख, सबसे पहले ये मेरी बहन थी बाजू वाली, मेरी बहन सिस्टर, और बहन का बेटा, तो बहन का बेटा भांजा, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, ऑप्शन डी, राइट। चल क्वेश्चन 56,
Pointing to a man, lady said, his mother is the only daughter of my mother. How is lady related to man? तो ध्यान से देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड, तो लेडी है ना, एक मैन को देखते हुए कुछ तो बोली, क्या बोलती है, हिज मदर। तो सपोज ये मैन है और मैन की कौन है, माँ है। देखो ना, हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लेडी क्या बोल रही है, उसकी माँ। उसकी माँ मतलब किसकी माँ, मैन की माँ। तो मैन की जो माँ है, इज द ओनली डॉटर, ये अकेली बेटी है। ये किसकी अकेली बेटी है, ओ मैन की माँ, मेरी मम्मी की अकेली बेटी है। मेरी मम्मी मतलब मैं तो लेडी थी ना, तो मेरी मम्मी की अकेली बेटी यानी कि मैं खुद हुई। इन शॉर्ट मैं ही लेडी हूं, मैं ही वो मैन की माँ हूं। मैन की मम्मी इज द ओनली डॉटर, वही अकेली बेटी। किसकी अकेली बेटी है, मेरी मम्मी की, मतलब ये लेडी की मॉम हो गई। तो लेडी की मॉम की अकेली बेटी यानी कि मैं खुद। मैं कौन हूं, वही मैन की मॉम। खत्म। तो क्या पूछता क्या है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन। मैन के हिसाब से लेडी उसकी कौन लगती है, बेशरम लड़का अपनी माँ को भूल गया। ये ऑप्शन ए आ जाओ। इन अ जॉइंट फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर। ठीक है। आउट ऑफ द सन्स 2 हैव डॉटर्स ईच एंड 1 हैज अ सन ओनली। मतलब 3 जो उसके बेटे थे, शादीशुदा बेटे थे, उसमें से क्या बोला है, 2 को 2 बेटियां थी एंड 1 को 1 ही लड़का था। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। तो स्टार्टिंग विद द, सबसे पहले तो देख फीमेल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले माँ तो थी, तो ये एक फीमेल मेंबर हो गई। फिर 3 मैरिड सन थे तो उनको 3 वाइफ्स होगी, तो इन शॉर्ट वो डॉटर इन लॉ, दिल कितना हो गई, 3। एक अनमैरिड डॉटर है तो क्या हुआ, वो वही घर को बिलोंग करती है, डॉटर एक। एंड आउट ऑफ द सन्स 2 है, मतलब 2 सन को 2 लड़कियां, मतलब 4 लड़कियां हो गई। इन शॉर्ट पोती, ग्रैंड डॉटर। ये कितनी हो गई, 4। सर 4 कैसे है, 2 को 2 ना, 2 2 जा 4, सब खत्म। अब टोटल कर रहे, 4 3 7 और 2 9, तो टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी है। इजी था क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू 58। व्हेन रानी सॉ विनीत, रानी ने किसको देखा, विनीत को देखा। तो किधर तो भी रानी होगी, किधर तो भी विनीत होगा। और उसने विनीत को देख के क्या बोला, विनीत ही इज द ब्रदर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन। रानी ने विनीत को देख के क्या बोला, वो भाई है, किसका भाई है, मेरे, माई ग्रैंड फादर। तो मेरा कोई तो ग्रैंड फादर है, मतलब ये दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। करंटली ग्रैंड फादर का मतलब 2 होता है ना। माई ग्रैंड फादर सन, तो मेरे ग्रैंड फादर का बेटा यानी कि मेरा बाप हुआ। और उसका ये विनीत कौन लगता है, ही इज द ब्रदर, वो भाई है, किसका भाई है, मेरे ग्रैंडफादर के बेटे का, यानी मेरे बाप का वो कौन है, भाई है, कौन, विनीत। अब पूछा क्या है, हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनीत। विनीत के हिसाब से रानी उसकी क्या लगती है, तो मेरे भाई की बेटी यानी भतीजी। इंग्लिश बोलता है उसको नाइस, अरे नीस बोलता है, मैं उसको नाइस नाइस करता हूँ, नाइस भतीजी। हिंदी में कन्वर्ट करो, वापस बोलता हूँ, बहुत इजी हो जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मत पढ़ो। चलो क्वेश्चन 59। अनन्या इज द मदर ऑफ सत्य। चालू करते हैं। अनन्या कौन है, चंकी की बेटी, ऐसा सब बोलने का नहीं। अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या। एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा। तो किधर तो भी श्याम है, वो कौन है, भीमा का बेटा है। शिवा इज द ब्रदर ऑफ अनन्या। शिवा कौन है, अनन्या का भाई। ओके, शिवा इज द ब्रदर ऑफ अनन्या। अपनी एक और लाइन बाकी, ओपन ज्वाइन करते देखते हैं। इफ सत्य इज द सिस्टर ऑफ श्याम, सत्य कौन है, सिस्टर है, मतलब ये देखो, ये लड़का नहीं है, सत्य लड़की है। तो सत्य इज द सिस्टर, किसकी सिस्टर है, श्याम की है। और श्याम के बारे में ऊपर कोई लाइन दिए थे अपने को, क्या दिया था, श्याम इज द सन ऑफ भीमा। श्याम किसका बेटा है, भीमा का बेटा है। अब ध्यान से देखना, अनन्या की बेटी सत्या, सत्या बहन श्याम की।
तो अनन्या माँ हो गई श्याम की, क्योंकि वो उसकी भी माँ थी। तो अनन्या और भीमा क्या रहेंगे, पति पत्नी। हाउ इज भीमा रिलेटेड टू शिवा, शिवा के हिसाब से भीमा क्या लगता है। तो धीरे धीरे जा, सबसे पहले शिवा किसको बुलाएगा, अनन्या को, क्या बोलेगा, बहन। और वो बहन का क्या है, पति है, पति। तो बहन के पति को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, राइट। चलो आ जाओ 60। सुमन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। सुमन कौन है, डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है किसकी, राकेश की। तो सबसे पहले अपने पास राकेश रहेगा और उसकी बहू रहेगी, मतलब राकेश का कोई तो बेटा रहेगा और उसकी वाइफ, वो कौन हो जाएगी, सुमन। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश। और सुमन कौन है, सिस्टर इन लॉ, इन लॉ मतलब वो बहन नहीं है, बहन जैसी है, मतलब सिस्टर इन लॉ लग गया ना, मतलब मैरिज वाला रिलेशन। और वो किसको किसको, कौन उसको सिस्टर इन लॉ बुला रहा है, राजेश। तो राजेश रहेगा इधर, मतलब ये भाभी बुला रहा है करंटली, क्योंकि ये उसका भाई हो जाएगा ना, जो राकेश का बेटा है। राजेश उसको भाई बोलेगा, भाई की वाइफ हो गई सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश में, हिंदी में बोलोगे तुम लोग भाभी। आगे बोला है रमेश इज द सन ऑफ राकेश, तो रमेश इसका बेटा है, और वही बोला है एंड द ब्रदर ऑफ राजेश। देखो हो गया, बैठ गया, पूरा बैठ गया। फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ सुमन विथ रमेश। तो सुमन विथ रमेश का रिलेशन क्या रहेगा, सुमन और रमेश का रिलेशन क्या रहेगा, हस्बैंड वाइफ का। वाइफ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन खत्म। इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग पूरी तरीके से होता है समाप्त, राइट। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन दे देते हैं, स्पेशली डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप लोग को देखना था, जो मैंने आपको अच्छे से समझा, शैडो वाला, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स पार्ट। आ जाओ, स्टैटिस्टिक्स पार्ट बी। सबसे पहला, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज। सबसे एक्यूरेट मोड, एक्यूरेसी की जब भी बात आती है तो टैबुलेशन का नाम आता है। क्यों टैबुलेशन का नाम आता है, क्योंकि आप यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, फॉर्मूला से आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट आंसर्स मिलता है, डेसिमल में मिलता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। सर डायग्राम से एक्यूरेसी नहीं मिलता है, क्योंकि देखो चलो आप लोग ने एलपीपी पढ़ा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, बराबर है, तो आप लोग उसमें चार्ट से भी आंसर ला सकते हो, मैक्सिमाइज जो करते हो, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो। तो कभी कभी देखना आपके चार्ट हिल जाते थे, तो वो डायग्राम था, पर फिर जो आप जो सॉल्व करते थे, कन्वर्टिंग इन इक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज वी गेट, याद आ रहा है, तो टैबुलेशन का भी हुआ था ना, जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो याद रखना, ठीक है, ये चीज मोस्ट एक्यूरेसी तो टैबुलेशन। आज 62, which is the left part of the table that provides the description of the row। तो रो का डिस्क्रिप्शन कौन देता है बेटा, स्टब देता है, स्टब। सी, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, याद रखने का, रो स्टब। 63, the mean of the 100 observation is 50 if one of the observations which was 50 is replaced by 40 the resulting mean will be। तो हम लोग ने ये चीज पहले भी देखी है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले सबमिशन एक्स निकालना है, उसको रेक्टिफाई करना है और फिर नया मीन लाना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है एक्स बार इक्वल टू सबमिशन एक्स बाय एन। तो रॉन्ग सबमिशन एक्स कैसे मिल जाएगा आप लोग को, रॉन्ग सबमिशन एक्स मिल जाएगा एक्स बार इंटू एन करके। तो करंटली आपका एन है 100 एंड एक्स बार इज 50, तो 50 इंटू 100। तो गलत सबमिशन एक्स कितना आ गया बेटा, आप लोग का आ गया 5000। अब इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 40, ऐसा हम लोग ने उसने दिया था, राइट। तो उसने क्या किया है, गलती से एक ऑब्जर्वेशन को 50 डाल दिया है, पर होना कितना चाहिए था, वो 40। तो हम लोग 50 को कर देंगे माइनस, 50 को बोल देंगे टाटा, क्योंकि अपनी गलती थी, और 40 को कर देंगे प्लस। तो हम लोग जैसे ही 40 को प्लस कर देंगे बेटा, -50 + 40, तो इन शॉर्ट -10, तो 5000 - 10 कितना हो जाएगा, 4990। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया करेक्ट सबमिशन एक्स। तब एक्स बार इजी हो जाएगा, 4990 आपका करेक्ट सबमिशन एक्स डिवाइड बाय 100 हो गया, आंसर आ गया 49.90, ऑप्शन बी। कैलसी की भी इधर जरूरत आपको नहीं थी, राइट। चलो आ जाओ 64, ओजाइव is of more than types and less than types of distribution intersect x। ओजाइव से हम लोग को क्या मिलता है, तो याद रखने का, ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, तो ऑब्वियसली मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज, पूरा ऐसा मॉड्यूल में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, मीडियन एंड अदर पार्टीशन
वैल्यूज। ऑप्शन बी। सर अदर पार्टीशन वैल्यू मतलब अरे डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, वो सब। आ जाओ 65. If the mean x bar is 10 and mode z is 7, find the value of median. तो आपको यूज करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इतनी बार क्या है कि अब तो रट्टा हो गया है, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन। अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। तो 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 मीन। अब अपने को यहाँ पे क्या दिया है, मीन दिया है जो कि है 10, मीडियन फाइंड आउट करना है, और मोड दिया है 7, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 20 ये बाजू आ जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 मीडियन। ऑब्वियसली मीडियन क्या हो जाएगा, 27 डिवाइड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 9। इजी, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये रट्टा मार के ही जाना, पक्का 1 मार्क फ्री में। स्पेशली बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो एसपी एसपी एसपी, मैं एसपी स्टूडेंट हूँ, मैं एसपी स्टूडेंट हूँ, उन लोग के लिए तो मतलब ये क्या ही बोले, खजाना है खजाना, ठीक है। चलो आ जाओ, 1-1 मार्क्स सब फ्री का है, ये तो तुम लोग कवर आराम से कर सकते हो। आ जाओ 66. If the coefficient of variation and standard deviation are 60 and 12, find the arithmetic mean of the distribution. आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। आपको थियरी भी साथ साथ में याद आनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेजर करता है, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। हायर द CV लोअर द स्टेबिलिटी, है ना, ये सब चीज आपको पता रहनी चाहिए। आ जाओ बात करते हैं इधर, तो CV दिया है आपको 60, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 12, तो x बार आपको फाइंड आउट करना है, तो x बार को इधर ले लेता हूँ, 60 को नीचे ले लेता हूँ, 12 1 जा 12, 5 जा 5 1 जा 5 20, आंसर आ गया 20 सी। इजी, कितना बच्चे जैसा था। अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। आ जाओ 67. Dash is based on all the observation and dash is based on the central 50% of the observation. सारे observations पे कौन बेस्ड है, तो सबसे पहले बात करते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस पे। क्या मीन डिविएशन सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक्स में से माइनस करते हो ना, एक्स देखो ना, फॉर्मूला कहता है मॉड्यूलस ऑफ, समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ क्या, एक्स माइनस या तो एक्स बार या तो मीडियन या तो मोड। मीन डिविएशन आप किधर से भी ले सकते हो ना, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मोड। तो उसके लिए आपको सारी वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। क्या रेंज सारी वैल्यू को कंसीडर करता है? नहीं। क्या क्वार्टाइल डिविएशन सारी वैल्यू को कंसीडर करता है? नहीं, वही तो 50% वैल्यू को कंसीडर करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीन डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन खाली सेंट्रल 50% वैल्यूज को कवर करता है। ये देखो ना, ये आपका Q1 रहता है, ये आपका Q2 रहता है, ये आपका Q3 रहता है, बराबर है ना। तो खाली ये बीच की वैल्यूज को कंसीडर करता है ना, सेंट्रल 50%, राइट। आ जाओ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 68. The relationship between two variables x and y is given by 4x minus 10y equals to 20. If the median value of variable x is 20, then what is the median value of variable y? अपना फेवरेट चीज, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। मीडियन है, मीडियन मतलब ये क्या है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन की भी इज्जत, स्केल की भी इज्जत, प्लस माइनस की भी इज्जत, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की भी इज्जत। पर डिस्पर्जन में ओरिजिन की इज्जत नहीं, स्केल की इज्जत होती है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ओनली, याद रखने का, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपने को x दिया है, y पूछा है, तो 4x माइनस 10y इक्वल्स टू 20, राइट। इसको मैं मीडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 4 मीडियन x माइनस 10 मीडियन y इक्वल्स टू 20, राइट। सो 4 मीडियन x माइनस 10 मीडियन y, तो 10 मीडियन y को मैं उधर लेके जाता हूँ और 20 को इधर लेके आता हूँ। सो 4 मीडियन x, तो 4 मीडियन x की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 20, एंड इक्वल्स टू 20 ये बाजू आ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 मीडियन y। अब बात करते हैं इधर, क्या ये मल्टीप्लिकेशन की इज्जत होती है, स्केल? हाँ जी हाँ बिल्कुल होगी। माइनस 20 का इंपैक्ट रहेगा ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 60 इक्वल्स टू 10 मीडियन y। वापस इधर मल्टीप्लिकेशन की इज्जत स्केल की रहेगी, तो मीडियन y विल बी इक्वल्स टू 60 बाय 10, दैट इज नथिंग बट 6। ऑप्शन भूलने का नहीं, वापस फ्री मार्क।
फ्री का 1 मार्क फ्री मार्क, ठीक है, लेके जाओ, आएगा ही आएगा एग्जाम में और आता ही आता है। 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मेथड नहीं है? स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन डिविएशन है, रेंज है, कॉनकरेंट डिविएशन मेथड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। मोड इज, मोड क्या है? लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऑप्शन सी। 71, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज क्या? तो मीडियन है, ऑब्वियसली ये रॉ डेटा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया था? असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे से बड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे में छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 30, 30, 35। 35 इज द फर्स्ट नंबर वी कैन सी। आफ्टर 30, 35 वी हैव 40 में है अपने पास 42। 40 में और कोई नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 50 जाते हैं। 51 वी कैन सी, देन वी हैव 56, देन 50 में और कौन है? 60 में वी हैव 67, then 72 we have 2 times, right? तो 2 बार 72, 72, then we have 81, 85 and 92। एक बार n गिन लेते हैं कि उसी से अपना आगे की जर्नी डिसाइड होगी कि कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ऑड से या इवन से, राइट? तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 है, 10 इवन ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोग को मीडियन पता है, एवरेज आएगा, किसका एवरेज आएगा? 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ टर्म का और 6 टर्म का ना, प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 का एवरेज, यानी कि फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म का एवरेज आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म इज 67, नेक्स्ट टर्म इज 72 का एवरेज। तो 67 प्लस 72 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका 69.5। So 69.5 is the correct answer. That is nothing but option A. Right? चलो 72. If the sum of squares of the value equals to 3390, sum of squares यानी कि बात कर रहा है वो सब्मेशन x स्क्वायर की, कितना है ये? 3390। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n आपका कितना है? 30। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 7। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द अबाउ ऑब्जर्वेशन? तो मीन कितना? तो आपको इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ सब्मेशन x स्क्वायर बाय n माइनस x बार द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप्लाई द फॉर्मूला सप्लाई द आंसर जैसी सिचुएशन हो गई। तो डायरेक्टली अपन अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं तो इधर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 दिया था, 7 का स्क्वायर, वो छपरा हट जाएगा। सब्मेशन x स्क्वायर भी है 3390 अपॉन n इज नथिंग बट 30 माइनस x बार, वही तो अपने को फाइंड आउट करना है, द होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। माइनस x बार द होल स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो प्लस x बार द होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3390 डिवाइड बाय 30 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 113 माइनस 49 ना, 7 का स्क्वायर ये बाजू ले लिया, तो 113 माइनस 49 इट कम्स टू 64। तो x बार द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 आ गया। तो वापस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो x बार इक्वल्स टू 8। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला के साथ उसने खेला। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये भी एक फॉर्मूला है, दूसरा भी एक फॉर्मूला है, सब्मेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज याद रखना जरूरी है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं होता तो मैं ये क्वेश्चन पूछ ही देता, क्योंकि 10 to 20% कैटेगरी के लोग होते हैं जो ये फॉर्मूला नहीं याद रखते, राइट? चलो 73 क्या बोलता है? 73 द मीन एनुअल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, बोला बेटा ऑल द एम्प्लॉयज मतलब सारे एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी 25,000, मतलब आपको ये कंबाइंड मीन दिया है, एक्स बार सी दिया है, एक्स बार सी कितना दिया है आपको? 25,000 दिया है। द मीन सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय, तो आपका नंबर ऑफ
नंबर ऑफ, एक अगर मैं बात करूं तो मेल की और फीमेल की, वो दिया आपको 27,000 एंड 17,000, उसका मीन दिया है, मतलब मैं मेल को बोलता हूँ x बार 1, फीमेल को बोलता हूँ x बार 2, 27,000 17,000। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ लेट मेल्स का परसेंटेज यानी कि n1 बी x परसेंटेज, तो ये n2 कितना हो जाएगा, यू नो टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100, तो हो जाएगा 100 माइनस x परसेंटेज, राइट। ऑब्वियसली n1 प्लस n2 करोगे तो आपको अपना 100 मिल जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं इधर अप्लाई द फॉर्मूला सप्लाई द आंसर की, तो क्या फॉर्मूला क्या आता है, x बार c इक्वल्स टू n1 x1 बार, तो 27,000 के साथ आ जाएगा x प्लस n2 x2 बार, तो n2 आपका है 100 माइनस x इंटू 17,000 अपॉन n1 प्लस n2 दैट इज नथिंग बट 100, राइट। तो 25,000 के साथ 100 लेके जाएंगे, तो आपका 25 लाख का फिगर आ गया। इधर ये 27,000 x प्लस इसको मैं ओपन करता हूं तो हो जाएगा 1,70,000 माइनस 17,000 x, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 25 लाख माइनस 17 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लाख इक्वल्स टू 10,000 x, तो ये x कितना आ जाएगा बेटा, 8 लाख डिवाइड बाई 10,000 दैट इज नथिंग बट 80%। तो आपको मेल्स मिल गया 80, तो फीमेल्स कितनी रहेगी 20, सो मेल्स इक्वल्स टू 80%, फीमेल्स इक्वल्स टू 20%। इजी था, राइट। चलो आ जाओ 74, इफ द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 18, तो वेरिएंस दिया आपको, वेरिएंस कितना दिया है 18 दिया है, और ये भी x का दिया है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 18 दिया है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो आपको वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 पूछा है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये चीज वापस बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल देखना पड़ेगा, फिर उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस का डायरेक्टली किधर भी नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड डिविएशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब इधर ही बात करते हैं, तो डिस्पर्जन में खड़े हैं तो ओरिजिन की इज्जत नहीं, स्केल की इज्जत होती है, राइट। ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आ जाएगा, स्केल की इज्जत होती है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका रहेगा। अब बात इधर करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन था, पर अपने को वेरिएंस दिया है, तो ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर इसका। अब इधर जो लोग गलती करेंगे, 2 का भी स्क्वायर होगा बेटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, अपने को डायरेक्टली वेरिएंस दिया है तो अपन वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x कितना दिया आपको 18, तो ये वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 18 आ जाएगा 72, ऑप्शन। जो लोग मेन गलती करेंगे ना बेटा, यही करेंगे कि ये 2 का स्क्वायर करना भूल जाएंगे, तो 2 का भी स्क्वायर होगा इधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 75, इफ द वेरिएंस ऑफ अ गिवन डेटा इज 12, मतलब वेरिएंस दिया है 12 एंड देयर मीन वैल्यू यानी कि x बार दिया है 40, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो अभी देखा था CV का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, तो CV अपन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वी नो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस 12 है तो रूट ऑफ 12 अपॉन 40 इंटू 100। तो चलो कर लेते हैं इसको अपन सॉल्व, 12 का रूट डिवाइड बाय 40 इंटू 100, इट कम्स टू 8.66 यानी कि 8.65, ऑप्शन डी, राइट। ऐसा 66 आ रहा है, पर वो लोग ने ऑप्शन में जो दिया अपने को वही मार्क करना पड़ेगा भाई। आज इजी था। 76, in a given set
इफ ऑल द डेटा आर ऑफ द सेम वैल्यू द वेरिएंस वुड बी क्या? तो ऑब्वियसली अगर सारा डेटा सेम है तो स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो रहेगा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो है तो उसका स्क्वायर वेरिएंस वो भी क्या रहेगा? जीरो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा था इधर। 77. If the arithmetic mean between the two numbers is 5, geometric mean is 4, then what is the harmonic mean? तो ये हो गया आपका relationship between GM, AM and HM. तो we know that GM equals to root of AM into HM. वापस ऐसे भी लिख सकते हो और you can directly write GM square equals to AM into HM. राइट, तो GM का स्क्वायर तो यानी कि GM कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AM कितना है 5 इंटू HM. तो सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा डिवाइड बाय 5, तो HM इज नथिंग बट 16 डिवाइड बाय 5 यानी कि 3.2. ऑप्शन इजी. रिलेशनशिप देखो वो लोग ने कितनी पूछी है, AM, GM, HM की पूछी है, मीन, मीडियन, मोड की पूछी है. वैसे QD, MD और SD की भी रिलेशनशिप है, वो भी आपको याद रखनी है. स्पेशली आपको काम का भी आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है उधर आपको काम में आएगा और जरूर आएगा. आ जाओ 78. द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 9 years. 15 स्टूडेंट्स का वापस में मतलब एक कंबाइंड का आप चीज पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो. आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 13, 8 स्टूडेंट्स इज 5 years. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स? तो चलो x बार c, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे x बार c आपको दिया है, कितना दिया है आपको? दिया है 9 years एंड n कितना है आपको? 15. अब यहाँ पे 2 नहीं 3 ग्रुप है तो n1 प्लस n2 प्लस n3 3, राइट. सो ध्यान से करते हैं 9 इक्वल्स टू टोटल अपने को दे दिया है 15. n1 x1 बार एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 30, तो n कितना है आपका? n1 कितना है 5 इंटू 30 प्लस n2 x2 8 स्टूडेंट इज 5 years, 8 स्टूडेंट इज 5 years प्लस व्हाट इज द एज रिमेनिंग एवरेज एज ऑफ 2 स्टूडेंट्स? तो आपको n वापस दे दिया है पर x बार 3 नहीं दिया है, तो वही अपने को फाइंड आउट करना है. तो चलो करते हैं 15 9 इज नथिंग बट 135, इसको m प्लस में यूज कर लेते हैं अपन. 13 इंटू 5 65 m प्लस 8 5 40, तो ये टोटल हो जाएगा 105 प्लस 2 इंटू एक्स बार 3. तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 2 इंटू एक्स बार 3 इक्वल्स टू 30. देयरफॉर एक्स बार 3 इज नथिंग बट 15 years. ऑप्शन आ जाओ. क्वेश्चन 79. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है. आज आप देखते हैं क्या बोलता है. टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकट ड्रॉज बेयर अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7? तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं. तो 20 में से कितने मल्टीपल ऑफ 3 निकलेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा में ज्यादा 3 इंटू 6 18, राइट. तो 6 नंबर ही हो सकते हैं. कौन से 6 रहेगा आप गिन भी सकते हो. 3 6 9 12 15 18. तो ऐसे 6 नंबर रहेंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे, 6 नंबर्स. चलिए तो लिख ही लेता हूँ. 3 6 9 12 15 18, 1 से लेके 20. फिर मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 कितने रहेंगे? 2 नंबर्स ही रहेंगे, 7 एंड 14, क्योंकि फिर तो 21 है आपका. ओके, अब दोनों का इंटरसेक्शन 3 एंड 7 के बीच में कॉमन, क्या कोई कॉमन नंबर है? नहीं है, तो माइनस नहीं होगा, वरना वो भी माइनस होता, राइट. कॉमन नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इज अ नंबर इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3 और 7. तो 20 नंबर है टोटल, राइट. तो ये आ जाएगा 6/20 प्लस 2/20 और कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस होगा नहीं, तो ये टोटल आ जाएगा 8/20. तो ये 4 के टेबल से जाएगा, तो 4 2 जा 4 5 जा, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, वापस मैं बोल रहा हूं अगर कॉमन नंबर रहता तो हम लोग उसको माइनस करते हैं. हाँ चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडेज. अब बात करते हैं इधर, तो लीप ईयर यानी कि 366
डेज 2024 जो चालू है वो कौन सा होगा, लीप ईयर, तो यहाँ पे 366 डेज. नाउ टॉकिंग अबाउट 366 डेज, राइट. नाउ इन 366 days there are 52 weeks plus 2 days. 52 7 comes 364 और 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं. अब ध्यान से समझना, 52 वीक्स मतलब 52 बार संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब आएगा. पर अब ये जो बाकी के 2 दिन है वो 2 दिन का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है. 2 दिन बच गए तो वो जो 2 दिन है ये 1 डे एंड 2 डे, मतलब यानी कि 365th डे एंड 366th डे, वो कौन से हो सकते हैं. तो देखो, अगर ये पहला दिन संडे है तो ये मंडे हो सकता है, ये मंडे है तो ये ट्यूसडे हो सकता है, ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे है तो ये थर्सडे हो सकता है, ये थर्सडे है तो ये फ्राइडे हो सकता है, ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे हो सकता है, ये सैटरडे है तो ये संडे हो सकता है, और वापस वो संडे तो वो वनडे. तो पहली पॉसिबिलिटी. तो कितने केसेस बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको क्या चाहिए, तो ये टोटल 7 केसेस बने, आपका सैंपल स्पेस हो गया. अब क्या बोला है कि 53rd संडे मिलेगा, तो संडे मुझे कब मिल सकता है, तो या तो संडे मंडे में संडे मिल सकता है, या तो सैटरडे संडे में संडे मिल सकता है. तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2/7. सो 2/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. सर अगर सैटरडे का पूछता है तो भी सेम, या तो सैटरडे संडे में हो सकता है या तो फ्राइडे सैटरडे में हो सकता है. सर फ्राइडे का पूछते हैं तो भी सेम. तो कोई भी दिन पूछता ना बेटा वो तेरे से, तो ये सेम आंसर ही रहता. क्लियर. 53 संडेज, 53 मंडेज, 53 वेडनेसडेज, सबके लिए सेम 2/7. क्लियर. चलो आ जाओ. क्वेश्चन 81. इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन उसने उछाला, तो आपको सैंपल स्पेस पता है, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, दैट इज कितना आ जाएगा आपका, 8 सैंपल स्पेस हो जाएंगे. What is the probability of getting 2 heads together, कि आपके 2 जो आए वो कैसे आए, हेड्स आए साथ में. अब देखो, आप जब एक बार चालू करते हो ना एक्सपेरिमेंट, तो आप 3 सिक्के, 3 सिक्के उछालो ना, तो ऐसा हो सकता है ना, हेड हेड हेड. तो ये 2 हेड साथ में है कि 3 हेड साथ में है, 3 हेड साथ में है. आपको 2 हेड साथ में चाहिए. तो कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं. तो सबसे पहला केस जो बेटा बन सकता है आपका, बन सकता है एच एच टी, जहां पे आपके 2 हेड्स साथ में. दूसरा केस बन सकता है आपका एच टी एच, 2 हेड्स साथ में. एक एक्सपेरिमेंट में 2 हेड्स हो, आपसे बोलना चाहता है. देखो अब थोड़े लोग इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे निकालना है पता है, कि मेरे को चिपक के ही 2 हेड्स चाहिए, ऐसा नहीं. वो एक एक्सपेरिमेंट के आप में 2 हेड साथ में आ रहे हैं. और ऐसा भी तो हो सकता है टेल्स हेड हेड. तो आपका आंसर आ जाएगा डी, 3/8. मेरे हिसाब से इसका ये जो मतलब निकलता है ये निकलता है कि आप लोग एक ही ट्रायल में 3 सिक्के उछाल रहे हो ना. ठीक है. अब थोड़े लोग ये भी बोल सकते हैं सर ऐसा कैसा, बीच वाला नहीं आएगा, 2 हेड साथ में नहीं है, 2/8 यानी कि 1/4, वो भी तो ऑप्शन में. मेरे हिसाब से ये निकलता है इसका मतलब, राइट. ऑब्वियसली फ्रेमिंग में थोड़ा मेरे को अभी भी वो लगता है, उसको थोड़ा बराबर फ्रेम करना चाहिए था. पर्सन टू पर्सन इसका व्यू चेंज भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से आप देखने को जाओ तो आप एक बार में 3 सिक्के उछालते हो, तो 2 हेड टुगेदर, उसमें भी तो है ही ना, क्यों इसमें नहीं है, 2 हेड साथ में नहीं है. ये आपका पूरा एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है ना, एक ट्रायल माना जाता है. चलो क्वेश्चन 82. A class consists of 10 boys and 20 girls. तो क्लास में क्या है, 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां. Of which half of the boys and half of the girls. तो आधे लोगों के पास मतलब 5 लड़कों के पास and half girls, 10 लड़की लोग के पास ब्लू आईज है. ब्लू आईज हिप्नोटाइज थ्योरी. आगे क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट अ रैंडम
इज अ बॉय एंड हैज अ ब्लू आई। तो यहाँ पे दो चीजें साथ में है, वो बॉय भी होना चाहिए और उसको ब्लू आई भी होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ बॉय विथ ब्लू आई, ब्लू आई। अब देख टोटल लोग कितने हैं, 30 ना। उसमें से तुझे एक लड़का चूज करना है जो बॉय भी है एंड ब्लू आई भी है। तो कितने रह गए, 5। 5 आउट ऑफ 30 यानी कि 1/6 ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे, इजी क्वेश्चन था एकदम, बच्चे जैसा था। 83, अ मशीन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। The manufacturing process of each part is such that the probability of a defective part of A is 0.08 and B is 0.05. तो defective, probability of defective of A, तो इसको मैं नॉर्मली अगर तू चाहिए ना तो मैं P of A बोलता हूँ, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव को अपन A डैश बोल देंगे। ये कितना दिया है अपने को, 0.08। तो इसका नॉन डिफेक्टिव यानी कि A डैश कितना हो जाएगा, 0.92, ये नॉन डिफेक्टिव का, ठीक है। अब वैसे ही बी का भी दिया है बेटा, बी का क्या दिया है आप लोग को, 0.05 एंड बी डैश की अगर मैं बात कर लूं तो हो जाएगा 0.95। ओके, अब आगे क्या बोलता है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल्ड पार्ट विल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट उसमें होगा नहीं। जब दोनों को साथ में लाओगे तो उसमें कोई भी डिफेक्ट रहेगा नहीं। इन शॉर्ट वो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि असेंबल्ड पार्ट में वो दोनों जाएगी। अब एक बात समझना, इंटरसेक्शन क्यों आया, क्योंकि वही पार्ट में ए भी रहेगा बी भी रहेगा। ओके, अब एक बात समझते, इधर फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या इधर वो डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, नहीं। क्योंकि ये जो इवेंट्स रहेंगे आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। ए में डिफेक्ट होना, मेरे में डिफेक्ट होना, क्या तेरे में डिफेक्ट होना या ना होना उससे फर्क गिरेगा। चल मैं इजी बात लेता हूं, मैं इजी वे में समझाता हूं। मेरा एग्जाम में पास होना, क्या वो तेरा एग्जाम में पास होना या नहीं होना उस पर डिपेंडेंट रहेगा, नहीं। तुझे अगर फेल होना है तो तू फेल ही होने वाला है, और मुझे भी अगर फेल होना है तो मैं फेल ही होने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा कि तू फेल तो मैं पास, नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स रह गए। तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ए डैश अपन ने फाइंड आउट कर लिया था, 0.92 इंटू 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। कर लो, 92 इंटू 0.95, द आंसर कम्स टू 0.874 ऑप्शन डी। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन। ध्यान से इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत ध्यान से यूज करना। देखो मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स भी देता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। डेथ, सर्वाइवल, फिर पास फेल, ये डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट, रनिंग द रेस। तो ये सारी जो सिचुएशंस और क्वेश्चंस बनेंगे ना, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ही बेस्ड है। अच्छा, क्वेश्चन 84, if P of A is 1/3, P of B is 3/4, P of A intersection B is 1/6, then what is P of A given by B। तो A given by B का फॉर्मूला क्या है, A intersection B, और नीचे B है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी वही आएगा। P of A given by B will be equals to P of A intersection B upon P of B। तो P of A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/6, द डिवाइड बाय B कितना है, 3/4, तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 इंटू ये 4/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 2 जा 2 3 जा 2/9 ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। आ जाओ 85, if a number is selected at random from the first 50 natural numbers, what will be the probability of the selected number is a multiple of 3 or 4। ये सेम क्वेश्चन अपन ने वो टिकट वाला किया, वही क्वेश्चन है, पर इधर नंबर ज्यादा है और 3 एंड 4 का मल्टीपल तुझे चाहिए। आ जाओ, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4।
वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए एंड 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं बेटा। तो वो कौन से रहेंगे 50 तक, तो 3, 6, 9, 12 लिखने मत बैठ, बहुत टाइम जाएगा। तो डायरेक्ट 3 एंड 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, तो डायरेक्टली 3 इंटू 4 करना, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। तो 50 तक 12 के टेबल दिखते जा, तो कौन से आएंगे 12, 24, 36, 48 हो गए। कितने नंबर्स है 4। ये ऐसे 4 नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 3 भी है एंड 4 भी है। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? होता है। क्या 4 से भी डिवाइड होता है? होता है। 24 3 से भी होता है, 4 से भी होता है। 36 3 से भी होता है, 4 से। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। और नहीं बोला है, और बोला है तो वो वाला क्वेश्चन होता तेरा जो ऊपर अपन ने सॉल्व किया, इधर एंड बोला है। पढ़ने का एक एक वर्ड से जज्बात बदल जाएगी तेरी। ऐसे कितने नंबर्स है 4, टोटल नंबर्स कितने हैं 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/25, ऑप्शन बी। इजी, प्लीज इजी है, सच्ची में इजी है। तुम लोग इसको समझो और सॉल्व करो, भले 3 सेकंड ज्यादा ले पर राइट सॉल्व करके आप प्लीज। एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीना वेस्ट नहीं करने का एक मार्क के लिए। कोई क्या बोलेगा 6 महीना क्यों बर्बाद हुआ है एक मार्क। चलो क्वेश्चन 86, if the first quartile is 56, third quartile is 77, find the coefficient of quartile deviation। तो coefficient of QD ढूंढना है। QD है QD, तो QD का कोएफिशिएंट क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, भूलने का नहीं। तो Q3 माइनस Q1, तो 77 माइनस 56 21, फिर 77 प्लस 56 133 इंटू 100। तो आ जाओ करते हैं, आंसर आता है 15.789 and I can see the option 15.79, ऑप्शन करेक्ट। चलो आ रहा 87, स्क्यूनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी स्क्यूनेस रहता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं रे, बिल्कुल नहीं। स्क्यूनेस का बेसिक मीनिंग क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें सिमेट्रिक, ये इसमें लैक हो रही है? नहीं, नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता ही है कि भाई ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल मतलब क्या? लेफ्ट भी इक्वल, राइट भी इक्वल। तो यहाँ पे स्क्यूनेस क्या रहती है? 0। पता होना चाहिए ये सारी चीजें। आ जाओ क्वेश्चन 88, इफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन का फॉर्मूला e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, वही करना है सॉल्व। और पूछा गया उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइजन का, तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं, n इंटू पी। सर इसका वेरियंस सेम, पॉइजन है, पॉइजन में मीन इक्वल्स टू वेरियंस, वेरियंस भी वही होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वेरियंस विच इक्वल्स टू रूट ऑफ m। चलो तो अब दिया हम लोग को पी एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करते हैं, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एम गेट्स कैंसल, एम स्क्वायर और यहाँ से भी स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो यहाँ पे एम बचेगा। 3 फैक्टोरियल को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो एम इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसल, तो एम इक्वल्स टू क्या आ गया 3। अगर एम इक्वल्स टू 3 तो स्टैंडर्ड डिविजन रूट ऑफ 3, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन, 15 सेकंड से 20 सेकंड में आंसर। अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। लोग है ना, ये चैप्टर को मैंने देखा है बहुत डर डर के सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्यों। अगर तुम मेरे से पूछे ना तो इसमें ऐसे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसी में खेलते हैं लोग, वेरिएशंस नहीं लाते। पर वो जो डिस्पर्जन है, सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसमें लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हैं। इधर वो लोग सेम टू सेम क्वेश्चन जो वही घिसा पिटा है। मैंने पास्ट में तेरे को 3-4 अटेम्प्ट की बात करूँ, एकदम बच्चे जैसे 5 मार्क्स इसमें से वो लोग पूछ लेते हैं। हाँ, तूने अच्छे से किया होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन 89,
द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में याद करने का, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, एंड यू नो स्टैंडर्ड डिवीजन इज रूट ऑफ वेरिएंस, तो रूट ऑफ एनपीक्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। प्रॉपर्टीज सारी याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन 90 क्या बोलता है, क्वेश्चन 90 देखते हैं। द स्पीड ऑफ द बाइक फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दे दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखते सीखते समझते एकदम इजी है। विथ मीन 80 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 9.4, मतलब म्यू दिया है म्यू 80 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 9.4, तो ये अपने को z में काम आएगा कैलकुलेशंस के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बाइक पिक्ड एट अ रैंडम ट्रैवलिंग इज मोर देन 95 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले अपन यहां पे इसका कर्व बना लेते हैं, ये हो गया इसका कर्व, ये सेंटर की लाइन, याद रखने का ये सेंटर की लाइन पे हमेशा z इक्वल्स टू 0, ये आपका नेगेटिव इंफिनिटी, ये आपका पॉजिटिव इंफिनिटी। नेगेटिव इंफिनिटी से 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी भी 0.5 रहती है, तो टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको बोला क्या है, z0 पे मीन, अब देख देख ये तेरा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो z जिधर 0 रहता है ना उधर मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होता है, याद रखने का। तो मीन कितना दिया है यहाँ पे 80 दिया है जब z 0 है। तो अब अपने को z फाइंड आउट करना है आगे जाके, जब वो बोलता क्या है, इट इज मोर देन 95, तो 95, तो अभी 95 देखने का, ये मीन तेरा 80 है, तो अब 95 इधर रहेगा कि पीछे रहेगा, ऑब्वियसली पीछे तो नहीं रह सकता है क्योंकि उधर 80 से कम की वैल्यूज रहेगी, तो 95 आगे रहेगा। तो इधर अगर ये 95 में प्लेस करता हूं, x इक्वल्स टू 95 में लिखता हूं यहाँ पे, मैं इधर x इक्वल्स टू 95 जब लिखता हूं यहाँ पे, तब z कितना होगा वो तुझे फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, तो z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उससे z मिल जाएगा, x अपन ने लिया 95, म्यू था 80 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन था 9.4, आ जाओ करते हैं, 95 माइनस 80 डिवाइड बाय 9.4, इट कम्स टू 1.597 विच इज नथिंग बट 1.6। सो ये पॉइंट पे बेटा आपका z कितना है 1.6, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाया ना उधर। ओके, अब वो क्या बोलता है, आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मोर देन 95, मोर देन 95 मतलब ये सारी वैल्यूज हो गई, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देनी। अब तेरे को एक उधर चीज दी है क्वेश्चन मार्क के बाद, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.6 विच इक्वल्स टू 0.4452, तो ध्यान से देखना, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, जीरो से लेके 1.6 तक, मतलब ये जो मैं ब्लैक कलर अभी शेड कर रहा हूँ, ये जो कलर है ना ब्लैक कलर वाला पार्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, कितनी दी है 0.4452, पर आपको चाहिए वो ग्रीन कलर वाली प्रोबेबिलिटीज, तो वो कैसे मिलेगी, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था z0 से लेके, मैं थोड़ा बड़ा कलर यूज कर रहा हूं और एक अच्छा कलर लाइट ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, z0 से लेके इंफिनिटी तक, इधर तक आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 0.5 रहती है, तो ओके, तो फ्रॉम z0 टू इंफिनिटी द प्रोबेबिलिटी इज 0.5, उसमें से अगर मैं ये वाली वैल्यूज काट देता हूं तो मेरे को ये वाली वैल्यूज अपने आप मिल जाएगी ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से काट रहा हूं, क्या काट रहा हूं, ये 0 से लेके 1.6 की वैल्यू काट रहा हूं, वो है 0.4452, तो उसको माइनस कर दो, करते हैं 0.5 माइनस 0.4452, इट कम्स टू 0.0548, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन, मेरे को ध्यान से देखना, मेरे को उसने 0 से लेके इन्फिनिटी, मेरे को पता है 0.5 रहता है, इधर भी 0.5, नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी 0.5, तो 1 हो गया प्रोबेबिलिटी पूरा। अब उसने क्या किया था, मेरे को मोर देन पूछा था, मोर देन, तो 0 से लेके 1.6 तक का वैल्यू मेरे को पता था, उसको मैंने काट दिया, तो बचेगा वो क्या बचेगा, मोर देन
95। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन 91, द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस आर गिवन, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आपको आर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करने का, असम्पशन लेने का, अगर आर की वैल्यू +1 -1 के बीच में लाई कर गई, आपका आंसर मतलब आपका असम्पशन बराबर है और आपको आर की वैल्यू पूछी है। तो चलो देखते आ जाओ। 4x + 3y + 7 = 0, 3x + 4y + 8 = 0. Now assuming the first equation as x on y, एंड इसको मैं y on x अज्यूम करता हूँ, तो x on y है तो x के फॉर्म में लेके आओ। 4x = -3y - 7, x = -3/4y - 7/4, और सेम चीज इधर, अब y on x है तो y के फॉर्म में 4y = -3x - 8, y = -3/4x - 8/4। अब मुझे यहाँ से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। ये x का इक्वेशन है तो इधर से ये bxy मिल जाएगा, तो bxy मेरा कितना होगा -3/4, एंड byx क्या होगा, वो भी मेरा है -3/4, दोनों -3/4 आ गया मेरा। अब देखते हैं क्या r की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है। अब एक प्रॉपर्टी आपको r की पता होनी चाहिए, तीनों की साइन हमेशा सेम रहती है, r, bxy एंड byx की। अगर या तो तीनों पॉजिटिव हो गए, तीनों नेगेटिव हो गए, तो इधर bxy और byx दोनों नेगेटिव है, तो r भी कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। -√3/4 × 3/4। क्या इसकी वैल्यू बेटा आपकी 1 और -1 के बीच में आ रही है? अगर हाँ तो आप जीत गए, आपका असम्पशन राइट था। कैलकुलेट क्या करते हो, √3/4 × 3/4 is nothing but r equals to -3/4, and -3/4 is nothing but -0.75, which is nothing but ऑप्शन ए, और आपका असम्पशन भी राइट है कि वैल्यू 1 और -1 के बीच में, राइट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं 92, the regression equations are 2x + 3y + 1 = 0, 5x + 6y + 1 = 0, the mean of x and y respectively are। तो आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, पहले भी हम लोग ने देखा और एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2x + 3y + 1 = 0, 5x + 6y + 1 = 0। ऊपर वाले इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो अपना काम हो जाएगा ना, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3y 6y है, राइट। चलो आ जाओ, तो 4x + 6y, अब वो +2 हो जाएगा, वो हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 5x + 6y और ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो आ जाएगा -x, ये कट जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा -1, तो x = क्या आ गया 1। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं किधर भी एक इक्वेशन में, तो 2 × 1 + 3y + 1 = 0, तो ये आ जाएगा 3 + 3y = 0, 3y = -3, तो y = -1, तो x = 1 आया, y = -1 आया, ऑप्शन सी। पहले भी हम लोग ने देखा था, अभी मैं बोल रहा हूँ एकदम इजी है, खाली साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आपका आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन 93, इफ byx = 0.5, bxy = 0.45, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r पूछा है, दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ऑफ 0.5 × 0.45 का स्क्वायर रूट, 0.5 × 0.45 का स्क्वायर रूट में करता हूँ, तो r = आता है 0.47, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डी। बेसिक क्वेश्चन है, 3-3 4-4 सेकंड के भी ये क्वेश्चन नहीं है, छी ऐसे क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछता है, नहीं पूछने का ना, हार्ड पूछने का ना थोड़ा। चल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, मतलब स्पीयरमैन्स रैंक आपको यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि क्या रैंक्स नॉट रिपीटेड है कि रिपीटेड है। रिपीटेड है रैंक्स अगर बाय चांस, तो रिपीटेड रैंक्स के लिए आपको करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, CF। चलो आ जाओ, तो देखते इधर मैथ्स के मार्क्स है, स्टैट्स के मार्क्स है,
और अपन फाइंड आउट करते हैं कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैथ्स है 3, 5, 8, 4, 7, 10, ये मैथ्स हो गया। फिर स्टैट्स की बात करते हैं 6, 4, 9, 8, 1 एंड 2। अब रैंक देते हैं, रैंक 1 मैथ्स के लिए, रैंक 2 स्टैट्स के लिए, फिर देखते हैं रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। तो सबसे पहले हाईएस्ट रैंक किसको मिलेगी, ऑब्वियसली जिसको सबसे ज्यादा मार्क है वो है 10 नंबर वाले को, रैंक नंबर 1। फिर 8 है 2, 7 है 3, फिर 5 है 4, 4 है 5 और ये है 6। तो 6, 4, 2, 5, 3, 1 ये आपका आना चाहिए मैथ्स के लिए। अब स्टैट्स के लिए हाईएस्ट है 9, तो इसको मिलेगा 1, फिर इसको मिल जाएगा 2, फिर इसको मिल जाएगा 3, फिर इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5 एंड इसको मिलेगा 6। तो 3, 4, 1, 2, 6, 5 आपका रैंक 2। अब देख लो किधर भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नॉन रिपीटेड है, तो डायरेक्टली अपन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर डिफरेंस का क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर। तो 6 - 3 डायरेक्टली कर ही लेते हैं, 6 - 3 आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 0, 0, 1, 1, 3, 9, -3, 9, -9 मत लिख देना गलती से, -4, 16। अब सर पता कैसे चलेगा ये मेरा राइट है कि नहीं, तो एक चेक स्टेप ये है कि ये सबमेशन डी का टोटल हमेशा 0 आता है। देख लो -4, -3, -7 एंड +7 हो गया 0। देख कभी भी अगर डी की वैल्यू 0 नहीं आए ना मतलब तूने गड़बड़ किया, सबमेशन डी हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चेक स्टेप है। चलो अब फॉर्मूला क्या है, r = 1 - 6 सबमेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1 बराबर है। तो चलो d का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 9 27 एंड 1 28 प्लस 16, दिस इज नथिंग बट 44 और n कितना है आपके पास 6 है। तो r क्या आ जाएगा 1 - 6 इंटू 44 अपॉन 6 इंटू 35 ना, 6 का स्क्वायर 36 आ रही है 35, तो ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो गया, डायरेक्टली कर लो 44 डिवाइड बाय 35 और इसको अपने को माइनस करना है, तो आंसर आ गया -0.257 एंड यस वी हैव ऑप्शन -0.26 ऑप्शन डी। ये था आपका स्पीयरमैन का, उसने कंसेप्ट टेस्ट किया, 3 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए था और आ भी जाता। राइट, आ जाओ मूविंग फर्दर। 95 क्या बोलता है 95, इफ y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the standard deviation of x and y are 5 and 8 respectively and the coefficient of correlation मतलब r दिया है, rxy दिया है 0.8, find the regression coefficient यानी कि by(x) फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया आपको 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया है आपको 8 एंड r दिया है आपको 0.8 and you have to find out b/x। तो b/x का एक फॉर्मूला था यूजिंग r, तो वही यूज करना पड़ेगा r इंटू, अब देखो y(x) है ना, तो ऊपर आएगा y नीचे आएगा x, तो r है 0.8 इंटू y है 8, x है 5, तो 8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 5, आंसर आ गया 1.28 ऑप्शन। इजी चीज है राइट। मैंने पहले भी आपको बोला था रिग्रेशन कोएफिशिएंट के 4 मेथड्स है, कितने मेथड्स है 4, रट्टा मार लो 4 मेथड्स है, कितने मेथड्स है 4 मेथड्स है, कितने मेथड्स है 4 मेथड्स है। पहला मेथड यूजिंग कोवेरियंस, दूसरा मेथड विद डेविएशंस, तीसरा विदाउट डेविएशंस एंड चौथा यूजिंग आर। ठीक है, चलो आ जाओ। Fisher's index number is called as the ideal index number because it satisfy, पहले भी बोला था अभी भी बोलता हूँ, 4 में से फिशर 3 टेस्ट सेटिस्फाई करता है, कितना टेस्ट सेटिस्फाई करता है 3। ठीक है, इसके लिए वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, फैक्टर भी करता है, टाइम भी करता है, सर्कुलर नहीं करता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। और तीसरा आपका यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो याद रखना यूनिट, फैक्टर, टाइम, सर्कुलर नहीं। आ जाओ
97. From the following data constructed the index number by last year's method. तो लास्ट ईयर हम लोग को क्या बोल के गया था, सबमिशन P1 Q0 उसने बेस ईयर को अपना वेट माना था अपॉन सबमिशन P0 Q0 इंटू 100, राइट। तो सबमिशन P1 Q0, तो P1 Q0 आपका है 106 अपॉन P0 Q0 वो है 83 इंटू 100। तो कर लो 106 डिवाइड बाय 83 इंटू 100। तो आंसर आ रहा है लास्ट ईयर का 127.71, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डी। उसने बाकी की वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आ जाओ 98, विच इंडेक्स नंबर measures the change from month to month in the cost of a representative basket of goods and services of the type bought by a typical household. Obviously the answer is retail price index, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं, फिशर्स नहीं, पास्ट ईयर नहीं, इसका नाम क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। नाम ही बोलते हैं रिटेल प्राइस। आ जाओ रिटेलर्स कौन है, आप और मैं, कंज्यूमर्स। चलो 99, if Fisher's index is 150, past year's is 144, last year is क्या, तो we know that Fisher's equals to root of last year's into past year's. Now obviously squaring on both the sides करोगे तो ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू लास्ट year's into 144। तो कर लो, लास्ट ईयर विल बी इक्वल्स टू 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 144, इट कम्स टू 156.25। ये भी ये लोग का फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, पूछ देती है अगर उसको टाइम पास के लिए पूछना हो तो। आ जाओ फाइनल क्वेश्चन, द 100th क्वेश्चन, सेंचुरी हो जाएगी अपनी कंप्लीट और ये पेपर हो जाएगा अपना डिस्कस। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, लेट्स सी। इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ कमोडिटी, न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, मेरे को नई कमोडिटी ऐड करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड, मैं क्या यूज करता हूँ, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, वो तो बेस ईयर शिफ्ट करने के लिए होता है। स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स, क्या मैं स्प्लाइस करता हूं, जी हाँ बिल्कुल मैं स्प्लाइसिंग यूज करता हूं। स्प्लाइसिंग मतलब क्या, जॉइनिंग द टू डिसकंटिन्यूड सीरीज। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मुझे नई कम्युनिटी ऐड करनी है, मतलब मेरे पास व्हीट है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, ये तीन चीज है मेरे पास, मेरे को एक काम करना है, मेरे को बैटरीज भी इस्तेमाल करना है उसमें साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल है, सीरियसली मत लेना, एक नई कमोडिटी में ऐड कर देता तो मैं क्या यूज करूंगा, स्प्लाइसिंग यूज करूंगा। स्प्लाइसिंग का बेसिक मतलब क्या है, दो डिसकंटिन्यूड सीरीज को कंटिन्यूस एक पूरी एक ही सीरीज बना देने की, राइट। तो इसी के साथ बेटा आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 ऑफ जून 2023 होता है खत्म। आई होप आप लोग को हमारे साथ मजा आ रहेगा, राइट। मिलेंगे फॉर मोर सच वीडियोस, और आपको प्लीज अगर सच्ची में मजा आया है, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।